Hello everyone, I hope you guys can listen me and welcome all to this webinar, Erasmus Mundus Scholarship webinar. And so many questions we got in last month and we thought to organize a webinar और बहुत से जो students हैं हमारे वो social sciences से थे और बहुत से जो students थे हमारे वो engineering background से थे, बहुत से management background से थे. We tried to incorporate all of these fields. और आज जो हमारे पास speakers हैं with Afifa, Ikra, Jawad, and all of these are from interdisciplinary fields and they will try to like share their experience कि उन्होंने किस तरह से documents prepare किए and honestly speaking it's very difficult to get their time because everyone is so busy in their academics and they have a lot of stuff to do and I'm very thankful for all of these people जिन्होंने अपने आपके लिए टाइम निकाला है and now we'll start and by the way to talk a bit about Scholars Avenue. Basically, this webinar was hosted by them, and it's just a platform to search for scholarships. If you are searching for scholarships at the moment, you guys can find all the scholarships, all the latest scholarships, and supporting material like how to write personal statement, SOPs, and things like this, LORs and templates, and how to search for scholarships on scholarsavenue.info. So I think that's all. And I would like to invite Afifa first, and Afifa will share her experience with you guys. Afifa is also a NUST alumni, and now she is pursuing her Erasmus Mundus Masters in Pioneer program. So I think Afifa's session will be available for all of you guys who are looking to go into Erasmus and any field related to social sciences or anything because overall experience of Erasmus is same for everyone. So now I would like to invite Afifa. So over to you, Afifa. You can share your screen and you can continue. Just let me give access to her. Okay. Hello. Usman, yes, am I Afifa, audible? you are audible. You can share your screen. Yeah, okay. Share कर पा रही हैं screen? I don't think so. Let me see. Okay. I'll try to figure this out. Just a second. Okay, I found this. Yeah. Okay. One second. No problem. Take your time. Is my screen being shared? Not yet, I think. Okay, I'll try again. Wait a second. Yeah, sure. Yeah, okay. I think we can share the screen now. Yeah, no, it's visible. No, you can. Okay. Just a second. Here I have it, and then I can just like. Yeah. Okay. Should I start? Okay. Yeah, you can start. Okay. Hello, everybody. My name is Afifa Mushtaq, and I'm currently pursuing my master's in public sector innovation and e-governance. And I received my Erasmus scholarship this year for the session, like for the intake of 2024 to 2026. I would like to tell you that how am I going to like sort of divide my presentation. So firstly, I would just briefly talk about my introduction and my background, and then I will move on to basically my experience of Erasmus, applying to Erasmus Mundus Scholarship. And मैं आपको एक बात बताती चलूँ that I think that जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, especially the aspirants, I can tell you for sure that I can relate to you on a lot of levels. आपको उस वक्त लगता है कि maybe जिन लोगों का scholarship में हो गया है, they have like they have something else और पता नहीं उनके ऐसे क्या उनकी अंदर चीजें थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है. But let me tell you that
a lot of times हम अपने आप को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं. तो I will definitely talk about this weaknesses that I thought I had, and all of you, I'm sure कहीं ना कहीं बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा confident होते हैं कि when we'll apply we'll get a positive response. Most of us are questioning के, और फिर वही बात होती है कि जब हम इतना ज़्यादा question कर रहे होते हैं, so sometimes we just end up not applying. हमें लगता है कि हम कुछ भी कर लें हमारा हो ही नहीं सकता, scholarship नहीं हो सकता. ठीक है, सो आई विल टॉक अबाउट दैट कि मेरे प्रोफाइल में मुझे क्या लगता था कि मेरी वीकनेसेस थी और वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी. Then I will talk about that why despite having those weaknesses, I was still able to get the scholarship. And after that, I will then talk about how you can, when you apply, can sort of incorporate those tips, and then you can also like stand out from the crowd because there are a lot of applicants. So about myself, I have a bachelor's in public administration from NUST, and I graduated in 2023. तो यानी कि मेरा सिर्फ 1 साल का बीच में एक्सपीरियंस था जो कि रेलेवेंट नहीं था. ना वो मेरी बैचलर्स डिग्री से रेलेवेंट था और ना ही वो मेरे मास्टर्स प्रोग्राम से रेलेवेंट था. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट दिस डाउन, क्योंकि आई विल बी एड्रेसिंग दिस थिंग कि मेरा रेलेवेंस इतना ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल आई मेड इट टू द स्कॉलरशिप. सो एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि मेरा जो स्कॉलरशिप में जब मैंने अप्लाई किया था तो दैट वाज नॉट माय फर्स्ट टाइम, इट वाज एक्चुअली माय सेकंड टाइम. फर्स्ट टाइम में आई वाज रिजेक्टेड एंड आई हैड अ CGPA ऑफ 3.45. ठीक है, so let's move on to the next slide now. One second, why am I unable to share my screen? Okay, here. Okay, so जब मैं अप्लाई कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था, एंड व्हेन आई वाज अप्लाइंग उस वक्त आई वाज इन माय 7th सेमेस्टर. तो 7th सेमेस्टर में और जब मैंने दोबारा अप्लाई किया था पाइए में, मेरे GPA में कोई डिफरेंस नहीं था. तो जो हमारा एक परसेप्शन होता है ना कि मेरा लो GPA है या मेरा बहुत ज़्यादा हाई GPA नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आई वांट टू रियली चैलेंज दैट परसेप्शन जो हमारी होती है. तो जब मैं अप्लाई करी थी तो मुझे था कि GPA की अगर मैं रह गई तो इन जो मेरी परसीव्ड वीकनेसेस है ना, इनकी वजह से मैं रह जाऊंगी. मुझे लगता था कि मेरा GPA उतना ज़्यादा नहीं है, एंड अगेन GPA एक बहुत रिलेटिव चीज़ होती है. जो बंदा 3.0 पे बैठा होता है उसको लग रहा होता है 3.3 का ज़्यादा है, 3.3 वाले को लग रहा होता है 3.5 वाले का ज़्यादा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी कि मेरा बहुत ज़्यादा हाई GPA नहीं था, मेरा 3.45 था, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, अगर सिलेक्शन होगा तो किसी ऐसे इंसान का होगा जिसका 3.8 GPA है या 4 GPA है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसके बाद जो मेरी जॉब थी, आई वाज वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट. So journalism is not related to public administration, right? And the program that I opted for after for my Erasmus Mundus journey was public sector innovation and e-governance, which was related to the digitalization of the public sector. तो वो भी एक फैक्टर था. मुझे लगता था कि रेलेवेंट जॉब नहीं है तो नहीं होगा. फिर मेरी जो भी इंटर्नशिप्स थी वो या तो 6 वीक्स की थी जब मैं बैचलर्स करी थी, या तो 8 वीक्स की थी, उससे ज़्यादा की नहीं थी. Obviously, when I had all these factors कि GPA नहीं है, relevant experience नहीं है, internships बस थोड़ी बहुत हैं, publications नहीं है. I went to this professor during my bachelor's and I spoke with him and I asked him कि sir, I want to apply, please tell me कि scholarship में अपनी profile किस तरह strengthen करूँ. He was like, बेटा आपका एक तो GPA भी ज़्यादा नहीं है, आपके पास publications भी नहीं है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका सिलेक्शन होगा. मतलब बहुत उन्होंने मेरे लिए बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था. उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया, but he was trying to tell me that you should improve your profile. So when I got the scholarship, I did not have any publications either. So now the question is, why was I selected? जब मेरा रिजेक्शन आया पाइनियर से और जब मेरा सिलेक्शन आया पाइनियर से, उन दोनों के बीच में मेरा GPA एक ही था. मेरा एक्सपीरियंस में सिर्फ एक डिफरेंस था, वो था मेरी जॉब का, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थी. So the difference was in my storytelling. When I applied the second time, I applied after putting a lot of thought and effort into it. और वो मैंने इस तरह किया कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि when I applied, तो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैं सिर्फ जब आप अप्लाई करते हो ना तो जस्ट कीप द प्रोग्राम इन फोकस कि कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करें. तो मेरा जो प्रोग्राम था वो डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड था, ई गवर्नेंस से रिलेटेड था. तो मैंने क्या किया कि अपने बैचलर्स में से एक कोर्स उठाया जो कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड था, एंड फ्रॉम दैट बैचलर्स कोर्स टू माय सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स, टू माय इंटर्नशिप्स,
to my thesis and then to the program that I was applying to, मैंने उन सबको एक थ्रेड की तरह उनको कनेक्ट किया कि किस तरह से आई टुक अ कोर्स इन ई गवर्नेंस, जो कि मेरा एक मैंडेटरी कोर्स था, जो कि मुझे जब मैंने वो लिया तो मेरा इंटरेस्ट स्पाइक हो गया उसके अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर. एंड देन आई डिसाइडेड कि अच्छा अब मैं, क्योंकि ई गवर्नेंस तो बहुत एक पोटेंशियल रखती है हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फॉर पाकिस्तान. सो हाउ कैन मे बी आई कैन लाइक मुझे ये था कि अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है वो किस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है. एंड देयरफॉर आई टुक अप एन इंटर्नशिप एट द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी. और फिर वहां पे मैंने क्या गैप्स आइडेंटिफाई किए, तो मैं स्टोरी मैंने ये बनाई कि मैंने एक कोर्स मेरा था, मेरा इंटरेस्ट हुआ, फिर जब मैंने इंटर्नशिप की तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा डिजिटली एडवांस्ड होगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर उतना एडवांस नहीं था. तो मैंने गैप आइडेंटिफाई किया कि there needs to be some digitalization in the ministry but there is none. And the reason was कि जो आपका पब्लिक सेक्टर का जो पर्सनल है वो खुद ही डिजिटली अवेयर नहीं है. वहां पे इतने बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे होते हैं बट दे आर स्टिल यूजिंग पेन एंड पेपर. दे डोंट इवन नो हाउ टू यूज एक्सेल, दे डोंट नो एनीथिंग. एंड बिकॉज आई न्यू कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ एंड कल को मैंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो आई शुड बेटर इक्विप माई सेल्फ विद दो स्किल्स. और मेरी डिग्री में कोई एक्सेल की क्लास नहीं थी, कोई एसक्यूएल की क्लास नहीं थी, कोई डेटा एनालिटिक्स नहीं था. सो आई डिसाइडेड टू देन टेक अप कोर्सेज ऑन कोर्सेरा. You see how I'm connecting? Then I said that I took up courses on Coursera, learned those skills for myself, for no one else but for myself, because I wanted to equip myself. And then मैंने उस चीज को रिलेट किया कि किस तरह से फिर थीसिस में मैंने अपना पूरा थीसिस क्वांटिटेटिवली किया था, क्योंकि अब मेरे पास वो स्किल्स आ गए थे कि मैं पब्लिक सेक्टर के इश्यूज को बहुत एक डेटा सेंट्रिक लेंस से देख सकती हूँ. राइट. देन आई टॉक्ड अबाउट के किस तरह से फिर जो मेरी जॉब थी दैट वाज अगेन नॉट वेरी रेलेवेंट, लेकिन अगेन देखें मेरा जो इंटेंडेड प्रोग्राम है दैट इज डिजिटलाइजेशन ओरिएंटेड. एंड जो मेरी जॉब थी उसके अंदर डेटा का एक छोटा सा कंपोनेंट था, मैंने सिर्फ उसको लिया और हाईलाइट किया कि किस तरह से मेरी जॉब ने मुझे फर्दर डिजिटली अवेयर कर दिया. ठीक है. तो आई निटेड इट ईच पीस ऑफ इट एंड देन आई वाज लाइक अब मैं सब कुछ ये मैंने कर लिया है. एंड नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट लॉजिकल स्टेप इन माय जर्नी इज टू टेक अप दिस मास्टर्स प्रोग्राम, क्योंकि अब मेरे पास कुछ रह नहीं गया मेरी कैपेसिटी में जो रह गया है. आई हैव डन एवरीथिंग. Secondly, the thing I did was I researched my program and the field at its highest possible extent. सिर्फ प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके पढ़ना कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स है तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, दैट्स नॉट इनफ. यू नीड टू सी द ब्रॉडर पिक्चर. उस आपका जो भी प्रोग्राम है इंटेंडेड, उसके अंदर कोई कीवर्ड्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं कि दिस इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रोग्राम, और ये इस तरह के एक्सपर्ट्स बनाना चाहते हैं Erasmus में. इस प्रोग्राम के थ्रू वो प्रोग्राम क्या अचीव करना चाहते हैं, यू रियली नीड टू आइडेंटिफाई दैट. And then when I say that I identified the unspoken requirements of the scholarship, by that I means ke sometimes you can have the best GPA, you can have the best, you could say profile, but you will still not be able to make it. Uski reason ye hai ki you are not unique. You need to bring something to the program, something to the cohort जो किसी और ने नहीं किया अभी तक, या कोई ऐसा आइडिया आप उनको sort of pitch करें जिससे ये पता चले कि you think very critically, जिससे ये जाहिर हो कि आपको सोचना समझना आता है और आप एक विजन रखते हैं. वो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है. यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर ऑन द वेबसाइट, राइट. तो आई फील लाइक कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में ये था कि आई वाज ट्राइंग टू से कि मैं पब्लिक सेक्टर डिजिटलाइजेशन के थ्रू पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज के केस को किस तरह से, लाइक सेक्सुअल अब्यूज का जो इशू है पाकिस्तान में, उसको मैं डिजिटलाइजेशन से किस तरह एड्रेस कर सकती हूँ, राइट. तो मैंने, अब ये वो बात है, मुझे पता है बहुत लोगों ने नहीं की होगी, लोगों ने बस आके बोला होगा हम डिजिटली पब्लिक सेक्टर को इनोवेट करना चाहते हैं क्योंकि हमारा बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम है. दैट्स नॉट स्पेसिफिक इनफ. यू नीड टू हैव अ स्टोरी, यू नीड टू हैव लाइक अ विजन कि एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक इंसान हो, आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते. सो बी स्पेसिफिक. देन आई केप्ट माई मोटिवेशनल लेटर, वीडियो एंड CV फुल ऑफ सब्सटेंस. सिर्फ अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी जॉब थी जर्नलिज्म की, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं जो है महीने के 20 आर्टिकल्स लिखती थी और मैं जो है वो ये कवर करती थी और मैंने 5 की टीम को लीड किया. this is not going to be relevant to my program. My program is related to digitalization. I should mention everything in my CV related to that. बेशक वो छोटा सा component है. For example, if you're a policy officer and you read a lot of policy papers on a daily basis, but you're applying to a program with a focus on digitalization, you better mention that in your CV. You should not be saying
Hello. Okay. So, sorry for No, that's okay. okay. So Okay. I was just trying to say that अपने CV को, अपने मोटिवेशनल वीडियो को और लेटर में कहानियां नहीं लिखें. मैंने अपनी मोटिवेशनल लेटर एक स्टोरी से ही शुरू किया था, बट दैट मोटिवेशनल लेटर जो स्टोरी मैंने बताई थी ना, वो मेरी सॉबिंग स्टोरी नहीं थी. वो ये नहीं थी कि मैं बहुत गरीब घराने से आती हूँ, मेरा जो है वो मेरे फैमिली में ये मसले थे या मेरे सिटी के ये इश्यूज थे. अगर मैंने कुछ भी स्टोरी उसमें बताई थी ना, तो वो स्टोरी जो है ना वो डायरेक्टली रिलेट करती थी मेरे प्रोग्राम से. जो भी I started with a problem that I was facing, and that problem was directly able to be solved by the program that I was applying to. And then I was called for the interview almost like 6 weeks, no, not 6 weeks, 3 weeks पहले. तो आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल डे जब मैंने बैठ के ये प्रैक्टिस नहीं किया कि मैं किस तरह से आंसर करूंगी. आई एम नॉट आस्किंग यू कि अगर आपको इंटरव्यू की ईमेल आ जाती है तो आप जो है ना रटें बैठ के आंसर्स, बट यू नीड टू सॉर्ट ऑफ हैव अ होलिस्टिक पिक्चर कि अगर मुझसे ये सवाल हो गया तो मैं किस तरह आंसर करूंगी. मोस्टली द क्वेश्चंस आर अबाउट योर मोटिवेशन, बट दे हैव टू मेक सेंस. योर मोटिवेशन शुड स्टेम फ्रॉम समवेयर. यू शुडंट से कि बस मैं पैदा हुआ तो मैंने डिजिटलाइजेशन करनी थी, राइट? यू हैव टू बिल्ड अप एंड इन अ वेरी रियलिस्टिक वे. डिस्पाइट दैट मैंने इरास्मस के अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया था. आई अप्लाई टू ऑलमोस्ट 13 scholarships. एंड while I was applying for Pioneer, I was साथ साथ मेरी रिजेक्शंस भी आ रही थी. एंड जनरली भी रिजेक्शंस ना भी आ रही हूँ, अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप्स इज अ वेरी डॉन्टिंग प्रोसेस. आप बहुत कम चांस होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. तो वो एक मेंटल आपको वो होता है कि अनसर्टेनिटी होती है कि मैं रोज उठती हूँ, मैं रोज उठता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पर पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. बट दैट्स एग्जैक्टली वेर यू नीड टू स्टे परसिस्टेंट. और तब मतलब आप कह लो कि यू हैव टू जस्ट बी स्टबर्न अबाउट इट कि नहीं मैंने करना है. यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट कि मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा, लेकिन मैं करूंगा. ठीक है? So that's very important. At least in my case, it was very important. So now how you can stand out. So I just have 6 points to cover. And firstly, everything in your profile, that whatever you're presenting in your application has to be relevant, starting from your motivational letter to your and degree also. Sometimes ऐसे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से वो बोलेगा अच्छा ठीक है ये भी तो सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है तो मतलब मैं रिलेट कर सकता हूँ इससे या मेरी डिग्री एलिजिबल है इसके लिए तो मैं अप्लाई कर देता हूँ. दैट्स मैंने बहुत लोगों से बात की है एरास्मस में, मेरे साथ बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं. तो मैंने एक ट्रेंड देखा है कि until and unless you have a very relevant case, आपका नहीं होगा सिलेक्शन. So don't apply to programs just because you're eligible. You need to have relevance. And by relevance I mean कि आपका जो डिग्री है पिछला वाला कि आप उसको अपने मास्टर से कनेक्ट कर सकते हो किसी भी तरीके से. मैं ये नहीं कह रही कि आपके पूरे सारे ECTS सिमिलर होने चाहिए, बट स्टिल देयर हैज टू बी सम बैकिंग. सेकेंडली बहुत दफा ऐसे होता है कि आई नो डेस्पिरेशन होती है हमारी, बट आई फील लाइक a lot of times के हमें लगता है कि जो स्कॉलरशिप है ना दैट्स आवर गोल. Scholarship is not your goal. Even if it is, you don't show it. Show it that this scholarship is the means to the bigger goal that you have. For example, for me, Pioneer was not my goal. It was my goal, but I didn't say that it was my goal. मैंने ये शो किया कि किस तरह से मैं पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के थ्रू सेक्सुअल अब्यूज को एड्रेस करना चाहती हूँ एंड किस तरह से पाइनियर मुझे हेल्प करेगा मेरा बिगर गोल अचीव करने में. तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मोटिवेशन लेटर में एंड पे आके बिल्कुल ना 2 लाइंस में बस बता देते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग माय डिग्री आई विल डू दिस 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 दिस, एंड दैट्स नॉट, नो, दैट्स नॉट इनफ. यू नीड टू सॉर्ट ऑफ शो देम कि आप मैं तो अपना गोल अचीव करके रहूंगा. अगर आप मुझे स्कॉलरशिप दे देते हैं तो दैट वुड बी अमेजिंग बिकॉज इट विल हेल्प मी. देन यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ लीडर. आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस आप हाईलाइट करोगे ना उसमें सॉर्ट ऑफ पोर्ट्रे योर सेल्फ एज समवन जो एक क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, someone who has the ability to take initiative, someone who's not a follower, someone who is a go getter. मतलब वो इंसान जो उठ के काम करने की सलाहियत रखता है, ना कि बस वो जो बातें करे कि ये मसला है मेरे पब्लिक सेक्टर में, ये मसला है. आई ऑल्सो डिड दैट, ऑफ कोर्स आई हाईलाइटेड द इश्यूज, बट मैंने ये भी बताया कि मैंने अपनी कैपेसिटी में क्या किया. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई सेड कि पब्लिक सेक्टर का पर्सनल जो है वो इतना ज्यादा डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो आई टॉक्ड अबाउट हाउ आई डिसाइडेड टू टीच माई सेल्फ दो स्किल्स. अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में मैंने क्या किया. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बातें करने से सिर्फ कुछ नहीं होता, एक्शन के थ्रू भी शो करना होता है. ठीक है?
Also, it's very important sometimes when we are writing our letter or we are applying, तो हम बहुत करीब से अपनी प्रोफाइल को देख रहे होते हैं, करीब से सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक हैव अ सेकंड ओपिनियन ऑफ समवन who you trust and who is relevant, someone who understands the degree that you're applying for. तो उनसे आप अपना ज़रूर रिव्यू कराएं, बिकॉज एंड एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कराया करें, क्योंकि आई थिंक इट रियली हेल्प्स, आपको एक और पर्सपेक्टिव मिल जाता है. दूसरी बात ये कि बहुत दफ़ा आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आप मेक यूज़ ऑफ लिंक्डइन एंड ट्राई टू रीच आउट टू द अलमनाई, बिकॉज वो आपको वो चीज़ें बताते हैं जो कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि वो लोग हैं जो उस प्रोग्राम में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. दे आर ऑलरेडी इन टच विद द पैनल दैट द स्कॉलरशिप इज, यू नो, लाइक दैट द स्कॉलरशिप पैनल हैज. सो लाइक वो एक ही बात है. तो जो प्रोफेसर्स उनके होते हैं, दे सॉर्ट ऑफ नो कि वो प्रोफेसर्स का जो फोकस है वो क्या है, what are the kind of students that the professors really appreciate, right? और वैसे भी ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिल जाती हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं हाईलाइट करूंगी कि पाइनियर में देयर वाज अ पॉडकास्ट जो उन्होंने स्टार्ट करनी थी बाय स्टूडेंट्स, और ये बात मुझे अलमनाई से पता चली थी कि पाइनियर इज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट अ पॉडकास्ट. तो मेरे इंटरव्यू में मैंने उनको मेंशन किया कि आई एम वेरी डीपली इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ पॉडकास्टिंग, सो आई गॉट टू लर्न दिस फ्रॉम एन अलमनाई कि आप लोग जो है ना पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं. सो इफ आई जॉइन पाइनियर आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो इस तरह से इट शोज दैट यू नो यू वेंट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड रीच्ड आउट टू पीपल. And then you need to tell a story that resonates with the program. अगर आप ह्यूमन राइट्स के किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना फोकस ह्यूमन राइट्स पे रखें, ना कि अपने सोल्यूशन पे. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, तो आई शुडंट बी लाइक कि हाँ मैं डिजिटलाइजेशन से ह्यूमन राइट्स को सॉल्व कर दूंगी और डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी है ह्यूमन राइट्स के लिए. नो, my focus should be human rights and how that like वो मेरा core होना चाहिए and बाकी चीजें उसको sort of back करना चाहिए उन चीजों को. I don't know if this point is making sense, but I just want you to know कि बहुत सॉल्व नहीं करना कि बहुत मेरी जिंदगी मुश्किल थी. अच्छा, जो अगर until and unless they're asking for something personal from you, just try to keep your story very practical and feasible and realistic, but also something, especially for social sciences, I feel like you have that रूम और मार्जिन जहां पे आप इमोशनली अपनी स्टोरी को कनेक्ट करवा सकते हो. बट अगेन, डू नॉट सॉब. बहुत ज्यादा रोती धोती स्टोरी नहीं चलेगी. यू नीड टू बी प्रैक्टिकल. I think I'll just end my presentation with this, and if you still have any questions after the session, after the Q&A session, you can still reach out to me on my email address or LinkedIn. Yeah, so thank you. I'll just hand over to the next speaker, I guess. Hello. Yes, thank you, Afifa. And it was a really nice discussion. And actually, I myself learned a lot. And that's happened when you listen to people, even your colleagues, you learn a lot. And the crunch of your presentation was that if someone is more relevant to the program, that's what the Erasmus is. Each program is very different, and you have to explore each program very differently and Yeah. learn from other people, ask them questions, go through each program, and that's the Erasmus. And thank you very much, Afifa. And if you have any questions to Afifa, we'll also take questions at the end. Now, I would like to invite Jawad. Jawad will discuss mostly his letter of motivation because he's expert in this. Actually, we also have a video on Jawad. He won 12 scholarships, 4 and 5 programs in Erasmus. So I think he's the right person to discuss about letter of motivation and SOP things. So over to you, Jawad. You can share your screen and let's continue. Hello, am I audible? Yes, Jawad, you are audible. Okay. Hello, everyone. I hope all of you are doing well. First of all, thank you, Usman, and the platform for the Scholar Avenues to give me the opportunity to present some insights. And the wonderful advices have been given by the Afifa. Let me share my screen first. Yes, Jawad, your screen is visible now. Okay, thank you. So before going towards our main topic, that is letter of motivation, let's start with my introductions.
So here is Jawad Bashir Mustafi. I have done my bachelor's in civil engineering from UET Lahore, and my batch was 2018 to 2022. लेटर ऑफ मोटिवेशन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफली अपनी स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा दैट इज़ मोर रेलिवेंट टू कंसिस्टेंसी। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। हम जो भी काम कंसिस्टेंटली करते हैं एक्चुअली हम उसकी तरफ डे बाय डे मूव कर रहे होते हैं। सो कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है बैचलर से। मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया था नस से सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन देन यूटी लाहौर में जब एडमिशन हो गया था तो मैं वहाँ पे मूव कर गया था। जब 2022 में मैं ग्रेजुएट हुआ देन आई स्टार्टेड माय मास्टर्स फ्रॉम यूटी लाहौर। मैंने अपना यूटी लाहौर से मास्टर स्टार्ट कर दिया था विद द जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केट। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने फील्ड की जॉब स्टार्ट कर दी थी। In the meantime, I got the offer to be as a faculty member in UMT Lahore. So then I joined UMT Lahore as a research engineer. तो देन मेरा मास्टर्स भी कंटिन्यू था यूईटी लाहौर में और यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर भी मैं वर्किंग कर रहा था। लेकिन सुन जब मेरा मास्टर्स कंटिन्यू था यूईटी लाहौर में तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी, आई डिजर्व मोर देन दिस। तब मैंने अपनी स्कॉलरशिप जर्नी स्टार्ट की। तब उस वक्त जो मेरे पास चीज़ें थी, मेरे पास मेरा सीजीपीए था, मेरे पास मेरी जॉब थी, मेरे पास यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी, उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था। In the first intake, which is 22 to 23, I applied for almost 8 to 9 scholarships in the first intake after my graduations, and every scholarship rejected me. पहले साल में मुझे almost 8 to 9 rejections आई। That is really a heartbreaking for me. पर मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना था क्योंकि मैं अपना मास्टर्स जो यूईटी से मैंने स्टार्ट किया था वो मैं फ्रीज करवा चुका हुआ था। तो एक तरफ वो फ्रीज मास्टर की टेंशन थी, दूसरी तरफ स्कॉलरशिप रिजेक्शंस की थी। देन आई क्रिटिकली इवेलुएटेड माई सेल्फ और मुझे ये फील हुआ कि मेरी प्रोफाइल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। So then I started working to improve my profile. So after that year, this was in my profile in which I applied for the second intakes. आई हैव द सीजीपीए, आई हैव द यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब इन चीज़ों पे मैं कुछ नहीं कर सकता था, ना सीजीपीए इंप्रूव कर सकता था, ना रैंकिंग इंप्रूव कर सकता था, लेकिन जिन चीज़ों पे मैं काम कर सकता था मैंने उन पे काम किया। आई पब्लिश्ड माय 4 रिसर्च पेपर्स विच इंक्लूड वन ऑफ माय बैचलर रिसर्च प्रोजेक्ट जो मैंने अपने सुपरवाइजर के साथ किया था। मैंने आफ्टर माय ग्रेजुएशन उसको पब्लिश किया। देन एज a research engineer at UMT, I published 3 more research papers, and I was in the one of the international conference. I presented my bachelor research paper in one of the international conferences, and that my bachelor paper was selected for the publication, and it again get published. फिर मैंने ऑनलाइन इंटर्नशिप्स की। आई डिड 1 इंटर्नशिप्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन। उसके बाद मैंने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स किए, मैंने कोर्सेज किए, उसके अलावा कुछ लीडरशिप एक्टिविटीज़ की जो आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन में लेटर ऑन मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो दीज आर द स्टेप्स विद विच यू कैन इम्प्रूव योर प्रोफाइल। सो जो फर्स्ट 2 बुलेट पॉइंट्स हैं दैट वाज माय प्रोफाइल इन द फर्स्ट इनटेक्स, और जो उसके बाद नीचे आप बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं ये मैंने अपने उस 1 साल की जर्नी के बाद सीखा कि इस तरह मैं अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मेरा मेन गोल ये था कि मैंने पहली इनटेक में जो 8 से 9 स्कॉलरशिप से मुझे रिजेक्शन हुई थी, अब मेरा मेन गोल ये था कि आफ्टर द सेकंड इनटेक मेरे पास ऑप्शंस हों कि मैं उन स्कॉलरशिप में से कौन सा चूज करूं, ना कि सिर्फ उनके पास ऑप्शन हो कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट करना है या नहीं करना। दैट वाज माय मेन गोल। So after the second intakes, I got almost 15 scholarships, जिसमें से 3 Erasmus की fully funded scholarships थी, Coastal Hazard, IMFC ग्राउंड वाटर, 8 कंजोर्शियम्स थी, और बाकी की लिस्ट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस्मान ने अपनी चैनल पे भी शेयर किए गए हैं। Then move towards the topic, that is basically the letter of motivation, and this is the slides for my program, that is IMFC International Master of Science in Fire Safety Engineering. This is a briefly overview. So before going towards the letter of motivations, these are the things which I think matters in these weightage. The maximum weightage, especially in context of Erasmus, has been given to CGPA, then university ranking. लेकिन ये वो 2 चीजें अगेन है जिसपे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर 2 स्टेप्स आप बाकी चीजों पे वर्किंग कर सकते हैं, अपने रिसर्च एक्सपीरियंस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिकमेंडेशन लेटर एंड अवार्ड्स। This is basically, this slide shows the purpose of letter of motivation कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन का पर्पस क्या होना चाहिए।
आप एक चीज जाते हुए क्लियर कर जाऊं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और पर्सनल स्टेटमेंट, these three are the same things but different names. So before going towards how to write it, first understand what is the purpose of letter of motivation. किसी चीज का पर्पस पता होगा तो ही हम उस चीज को बेहतर तरीके से हम उसको राइट अप कर सकते हैं. So these three are the main purpose of letter of motivation. The first is to showcase the motivation. मैंने जितने भी आज तक लेटर ऑफ मोटिवेशन रिव्यू किए हैं, द मेन ड्रॉबैक उसका यही है कि हम लोग मोस्टली लेटर ऑफ मोटिवेशन में ये बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ये है, हमारी एजुकेशन ये है और हमने ये प्रोग्राम करना है, जिसमें मोटिवेशन होती नहीं है. हमने उसको लेटर ऑफ एक्सपीरियंस बनाया होता है, हमने कहाँ जॉब की है, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, मोर और लेस हम सीवी में कवर कर चुके होते हैं. हमने उसको मोल्ड करना है अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और उसको एज ए मोटिवेशन शो करना है. दैट इज द ट्रिक. सेकेंड इज टू रिवील द गोल. आप लोगों ने अपने फ्यूचर गोल्स को उस प्रोग्राम और अपने एक्सपीरियंस के साथ लिंक करना है. अगर आप लोगों के कोई फ्यूचर गोल्स आप लोग उसके साथ लिंक नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट गोइंग एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स. The third one is to demonstrate the suitability. That is the most efficient way to get the scholarships. Among many candidates, you have to be the most suitable one. और वो आपने उनको डायरेक्ट नहीं बताना कि I am the fit one. आप लोगों ने इनडायरेक्टली अपना एक्सपीरियंस, अपनी मोटिवेशन, अपने गोल्स इस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं कि दिस प्रोग्राम हैव बीन मेड फॉर यू. आपने उसी प्रोग्राम के लिए बने हैं और उसी के थ्रू आप लोगों ने आगे जाना है. उसके लिए आप लोगों ने अपनी सूटेबिलिटी को इनहेंस करना है. सो बेसिकली दीज आर द 5 पैराग्राफ्स ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट्स. मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं जब कोई भी लेटर ऑफ मोटिवेशन जब राइट अप करता था तो मैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता था. मैं अपना LOM मोर और लेस इन 5 पैराग्राफ्स के थ्रू लिखता था. In the first paragraph, I mention my motivation, that why I am applying for this particular programs. Like Erasmus have more than 189 or 190 programs. Why I am applying for this particular program? उसके लिए एक solid motivation की जरूरत होती है. For example, I am in fire safety engineering. My bachelor project was in fire safety, so that I have the relevant experience. But मुझे उसको motivation बताना है कि मैंने fire ही क्यों choose की. सिविल इंजीनियरिंग के बाद आप हाइड्रोलिक्स वाली साइड पे जा सकते हैं, जियो टेक्निकल साइड्स पे जा सकते हैं, रोड नेटवर्क की तरफ जा सकते हैं. फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग ही क्यों? उसके लिए मुझे एक सॉलिड मोटिवेशन की जरूरत है, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग अपनी मोटिवेशन बताएंगे. एंड अवॉइड जेनेरिक लाइंस कि मेरा इसमें इंटरेस्ट था. हाँ, हमें पता है आपका इसमें इंटरेस्ट था, इसीलिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ? दैट वी नीड दिस सॉलिड रीजन. सेकेंड इज दी स्पेसिफिक चैलेंजेस कि आप लोगों के ग्लोबल लेवल में और आप लोगों के जो नेशनल लेवल में है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, द इश्यूज दैट आर करंटली फेसिंग इन पाकिस्तान एंड द इश्यूज आर ऑन द ग्लोबल लेवल. इन दोनों चीजों को आप लोगों ने टारगेट करना है. अभी तक जितने मैंने रिव्यू किए उसमें मेन इशू ये भी आता है कि हम मतलब जो जितने भी पाकिस्तानी एल्बम राइट करते हैं वो चैलेंजेस बताते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान. जो यूरोप है वो पाकिस्तान के लेवल से काफी ऊपर आ चुका है उन चैलेंजेस से. जो चैलेंजेस पाकिस्तान में हम फेस कर रहे होते हैं, यूरोप में वो चैलेंजेस नहीं है, वो उससे एक स्टेप अहेड फॉरवर्ड मूव कर चुके हुए हैं. तो आप लोगों ने इतने पुराने चैलेंजेस नहीं मेंशन करने हैं जिसकी यहाँ पे फिलहाल कोई वर्थ नहीं है. तो मेंशन चैलेंजेस इन केस ऑफ ग्लोबल लेवल. थर्ड पैराग्राफ इज अप्लाइंग द गेन नॉलेज. इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को कौन सा ऐसा नॉलेज और कौन से ऐसे फैक्टर्स डेवलप होंगे जो आप लोगों के अबव पैराग्राफ में जो चैलेंजेस आप लोगों ने मेंशन किए हैं वो सॉल्व करने में हेल्प आउट करेंगे. दैट इज द बेसिकली लिंकेज बिटवीन योर मोटिवेशन, between the challenges of the world and the role of this program in solving these challenges. These paragraphs are interlinked. ये 3 पैराग्राफ में आप लोगों का स्मूथ फ्लो होना चाहिए और इन तीनों में आप लोगों का लिंकेज परफेक्ट होना चाहिए. देन फोर्थ पैराग्राफ में आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन और पास्ट एक्सपीरियंस बताएंगे. दैट इंक्लूड योर एकेडमिक एक्सपीरियंस, योर वर्किंग एक्सपीरियंस एंड योर रिसर्च एक्सपीरियंस. ये तीनों एक्सपीरियंस इस पैराग्राफ में आएंगे कि आप लोगों ने बैचलर्स कहाँ से की, उसमें क्या अचीवमेंट्स थी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप लोगों का कौन सा उस प्रोग्राम के साथ लिंक करता है, and your thesis, your publications, and all these things will be mentioned in this paragraph. And in the last paragraph, you will mention your career goals, okay, how you perceive your career after 5 years, or you can say after 10 or after 15 years. सिर्फ ये मेंशन नहीं करना कि ये प्रोग्राम या ये स्कॉलरशिप आपका गोल है. जैसा कि अफीफा ने भी आप लोगों को बताया कि फ्यूचर लॉन्ग टर्म बिग गोल्स को आप लोगों ने टारगेट करना है और इस स्कॉलरशिप को एज ए मीन यूज करना है कि वो आपके बिगर गोल्स की तरफ आपको लेके जा रही है. So these 5 paragraphs are the main structures of your letter of motivation. Then before going towards the do's of letter of motivation,
we will first discuss the don'ts because they are more important. ये वो चीजें हैं जो आपने अपने LOM में कभी भी नहीं करनी. First thing is copy paste to AI generated. You can take the help from AI tools like ChatGPT, but don't copy paste. आइडिया लें और उसको खुद से राइटअप करें. AI टूल्स को सिर्फ आइडिया लेने के लिए आप लोग यूज करें, देन उसको राइटअप आप लोगों ने खुद करना है. AI जनरेटेड आप लोग यूज करेंगे तो वो हम रिव्यू करें तो ही, मैं अगर ये रिव्यू करूं आप लोगों के LOM तो मुझे आइडिया हो जाता है कि इसमें कितना AI यूज हुआ है. तो जो इतने सालों से LOM रिव्यू कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी में हैं, उनको तो फॉर श्योर पता चल जाता है. तो आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना. सेकेंड थिंग इज डू नॉट यूज क्लीशे सेंटेंसेस जो हर बंदा ही यूज कर रहा है. क्योंकि ग्रुप्स में भी काफी सारे ऐसे एलम आते हैं जो सीनियर्स की तरफ से आए हैं और उसमें वो मोर और लेस हर कोई रिपीट करता जा रहा है. तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस बन गए हैं दैट आर क्लीशे और जो बार बार रिपीट होते हैं. डोंट यूज क्लीशे सेंटेंसेस. Third thing is that very hard or complex English shouldn't be used because for the Europeans they don't have the first language as English. इनकी अपनी जुबान है तो इनकी इंग्लिश भी कुछ बहुत अच्छी नहीं होती. इंग्लिश इनकी भी सेकंड लैंग्वेज है, तो आप लोग बहुत मुश्किल या हार्ड करोगे तो इनके लिए अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होगा और वो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होगा. तो आप लोगों ने अपने लेवल पे रह के आप लोगों ने इंग्लिश यूज करनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना. Fourth thing is that do not choose same letter of motivation for all scholarships. आप Erasmus के अलावा बाकी भी जगह अप्लाई कर रहे हैं तो सेम LOM यूज नहीं करना. कस्टमाइज योर LOM डिपेंडिंग अपॉन दी योर प्रोग्राम. रेलिवेंसी मैटर करनी चाहिए. सेकेंड लास्ट थिंग इज दैट डू नॉट राइट वेरी लॉन्ग LOM. आप लोगों की एक लिमिट होनी चाहिए जिसमें आपने LOM लिखना है. और कुछ स्कॉलरशिप्स एरास्मस की ऐसी हैं जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देती हैं दैट योर LOM शुड बी विद इन दिस मच पेज और योर कैरेक्टर्स इंक्लूडेड स्पेसेस और विदाउट स्पेसेस शुड बी दिस मच. तो जो उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होगी डोंट गो अबव इट. और अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं भी गिवन देन मैक्स 1.5 पेज इज मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा ना जाएं. 1 to 1.5 पेज इज मोर देन इनफ. Quality matters, quantity does not in case of letter of motivation. Now, these are the do's of letter of motivation. You have to incorporate all these do's to get your best LOM. First is to use the positive tone. Do not use negative tone in your LOM. Like, do not say like, I am very poor, I cannot afford my, you can say tuition fee. So do not use this. Use always positive tone. Reflect yourself as a positive candidate. Second thing is the impactful storytelling, and the storytelling should be related to your programs, not your whole background. आप अपने बैकग्राउंड से ये भी स्टोरी बना सकते हैं बट दैट शुड बी विद इन 1 to 2 lines, नॉट मच लॉन्ग. थर्ड थिंग इज दैट यू शुड मेंशन क्लियर मोटिवेशन. आप लोगों की मोटिवेशन डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए, हेयर एंड देयर मूव नहीं करना. एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल डायरेक्शन के थ्रू आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन बतानी है. आप लोगों ने मोर हेयर देयर नहीं करना. And then highlight achievement and skills, clear career goals, research and customization. That is the most important point. आप लोगों ने एक प्रोग्राम में अगर अप्लाई करना है Erasmus के तो आप लोग उसकी वेबसाइट ओपन करें. पहले तो उस पूरी वेबसाइट का आप लोगों ने रीड आउट करना है कि वो प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या. क्योंकि जो Erasmus के प्रोग्राम है वो मोस्टली मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं, किसी एक फील्ड के नहीं है. तो पहले तो ये पढ़ें कि उनको कौन सा कैंडिडेट चाहिए और वो किन फ्यूचर गोल्स पे काम कर रहे हैं, कौन से पार्टनर्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो पार्टनर्स हैं वो किन किन फील्ड में, किन किन डोमेन में काम कर रहे हैं. तो उस डोमेन में काम करें. हर Erasmus के programs के have some specific partners and they are working on their specific domains in Europe or outside Europe. So your future goals should match with these domains. तो आप लोगों ने पहले रिसर्च करनी है, देन अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन कस्टमाइज करना है. Then your letter of motivation should be well structured. मेरे पास कई ऐसे लेटर ऑफ मोटिवेशन रिव्यू के लिए आए हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता. पहला पैराग्राफ एंड वाले पैराग्राफ में होना चाहिए था, एंड वाला दरमियान में होना चाहिए था. सो योर लेटर ऑफ मोटिवेशन शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड. मैं जो स्ट्रक्चर यूज करता था वो मैंने आप लोगों को शो करवा दी है. देन आप लोग को जो मतलब आप लोगों के लिए सूट करते हैं आप लोग वो स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम्स यूज करें. एंड योर LOM शुड बी वेरी क्लियर. आपने कुछ ऐसा यूज नहीं करना कि वन पैराग्राफ से जब सेकंड पैराग्राफ में जाते हैं तो उसमें एक स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए, एक अब्रप्ट चेंज नहीं आना चाहिए कि मैं पहले ये पढ़ रहा था अब तो बात ही बिल्कुल ही चेंज हो गई है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट you should do proofreading your LOM.
ये LOM कोई ऐसा काम नहीं है जो आप लास्ट नाइट पे कर सकें। एज फॉर एज मी, आई कैन नॉट राइट माई LOM इन ए सिंगल सिटिंग और नॉट इवन इन ए सिंगल डे। मुझे काफ़ी दिन और काफ़ी टाइम चाहिए होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने के लिए। तो आप लोग LOM एक दफ़ा लिखें, देन उसको प्रूफ रीड करें। और ह्यूमन नेचर भी ये है कि हम एक दफ़ा अपनी जो स्टेटमेंट लिख लें, अगर हम उसको दोबारा उसी टाइम पढ़ रहे हो तो हमें मिस्टेक नज़र नहीं आती। आप कुछ दिन का डिले करके आप दोबारा उसको पढ़ेंगे तो तब आपको मिस्टेक नज़र आएगी। नहीं तो फर्स्टली अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा ये बेस्ट लिखा हुआ है, इसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए ही नहीं। तो प्रूफ रीडिंग इज द की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू इम्पोर्ट द पर्सनल टच इन योर लेटर ऑफ मोटिवेशन, कि आप लोगों ने अपने LOM को जितना भी पर्सनल टच देंगे वो उतना बेहतर होगा। जितना वो जेनेरिक होगा उतनी रिजेक्शन के चांसेस हाई होंगे। जितना पर्सनल टच का बेसिकली मीन ये है कि आप लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल चीज़ें उसमें शेयर करनी है। जेनेरिक चीज़ें नहीं शेयर करनी है जो सबके साथ सेम होती हैं। जितना पर्सनल होगा उतना आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस है। एंड लास्ट वन इज कॉल टू एक्शन, कि आप जो बातें अपनी LOM में कर रहे हैं दैट शुड बी अचीवेबल, दैट शुड नॉट बी लाइक द ब्रेकिंग द कैसल। वो आप लोग जो भी यूज कर रहे हैं दैट शुड बी अचीवेबल एंड दैट शुड बी प्रैक्टिकल। So these are the some tools of LOM, and these are the some common mistakes that should be avoided. First is the missing deadlines. आप जिस भी प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट से डेडलाइंस एक सेपरेट पेज पे लिख लें और उसको लाइक रिव्यू करते रहें कि कोई डेडलाइन मिस ना हो, क्योंकि Erasmus की डेडलाइंस काफ़ी चेंज होती हैं प्रोग्राम्स की। तो जिसकी डेडलाइन पहले आ रही है उस पर पहले काम करें एंड देन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करें, डेडलाइंस को मिस ना करें। सेकेंड थिंग इज दैट डू नॉट सबमिट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर आप लोगों का काम कंप्लीट नहीं हुआ, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो सबमिट ना करें बजाय इसके कि आप लोग रिस्क लें, क्योंकि इट विल बेसिकली डिस्टर्ब द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एक्सेप्टेंस तो नहीं मिलेगी लेकिन पाकिस्तान की रेपुटेशन ज़रूर खराब होगी। तो जो एप्लीकेशन आप लोगों की कंप्लीट है, सबमिट दोज एप्लीकेशंस। थर्ड इज नॉट नेग्लेक्ट प्रूफ रीडिंग। जो भी आप लोग CV कर रहे हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो भी आप राइट कर रहे हैं उसकी ऑलमोस्ट मिनिमम 3 दफ़ा तो प्रूफ रीडिंग किया करें बिफोर सबमिटिंग। तो प्रूफ रीडिंग इज द की। एंड द लास्ट वन इज जेनेरिक पर्सनल स्टेटमेंट। अगर आप लोगों की पर्सनल स्टेटमेंट बहुत जेनेरिक है या मिलती जुलती है सबके साथ, तो वो आप लोगों को कहीं नहीं लेके जाएगी। आप लोग जितना पर्सनल टच देंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। देन सम आर द डाउनसाइड एंड सम आर द अपसाइड। Erasmus Scholars की डाउनसाइड ये है कि कहीं ना कहीं इसकी एल्गोरिदम में लक मैटर्स करता है। मैंने अभी तक जितना भी Erasmus के सिलेक्शन के एल्गोरिदम को ऑब्जर्व किया है या जितना भी मेरे उनके सिलेक्शन कमेटी वालों से ईमेल के थ्रू बात हुई है, दैट इज every programs have this separate AI algorithms. Depending upon the AI algorithm, they first perform the scrutiny और उसके बाद देन इंटरव्यू में वो फाइनल सिलेक्शन करते हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, हमारे पास QS रैंकिंग है, हमारे पास वेबोमेट्रिक रैंकिंग है, HEC पाकिस्तान की रैंकिंग है, दी टाइम्स रैंकिंग है। तो कुछ प्रोग्राम्स डिफरेंट रैंकिंग यूज़ करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स कोई और रैंकिंग यूज़ करते हैं। तो मे बी किसी एक प्रोग्राम में आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत नीचे हो तो उस प्रोग्राम में आपको रिजेक्शन वहाँ पे उस मार्क्स वाला सीन हो जाए। कुछ रैंकिंग में आप लोगों की यूनिवर्सिटी ऊपर हो तो लक मैटर करता है डिपेंडिंग अपॉन AI एल्गोरिदम। और सेकंड थिंग इज द रिजेक्शन हर्ट्स। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। हमारा एक Erasmus का प्रोग्राम है M-Build के नाम से। इवन द टॉपर्स ऑफ UET और टॉपर्स ऑफ NUST, उनकी उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते जो आप लोगों का सिलेक्शन के मार्क्स होते हैं, जितने एक कम GPA वाले के ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले के मार्क्स होते हैं। तो द की इज कि M-Build का जो एल्गोरिदम है उनकी ज़्यादा वेटेज वर्किंग एक्सपीरियंस पे है बजाय इसके कि एकेडमिक एक्सपीरियंस पे। तो काफ़ी सारे Erasmus प्रोग्राम्स का ये जो मार्क्स वाला क्राइटेरिया उनकी वेबसाइट पे मेंशन भी होता है, तो वो भी एक दफ़ा विजिट कर लें कि उन्होंने मैक्सिमम वेटेज किसको दी हुई है, तो आप लोगों ने किस पे ज़्यादा काम करना है। और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क पे आप लोग चलें। जो भी चीज़ें हैं एक टेक्निक्स और एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करें एंड ट्रस्ट गॉड एंड अप्लाई एज मेनी स्कॉलरशिप एज यू कैन। सो इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। आप लोगों को भी लगता होगा कि जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई है उन्होंने पता नहीं क्या किया है, लेकिन ये इम्पॉसिबल ही लगता है जब तक आप खुद ना कर लें। जब एक दफ़ा हो जाएगा देन इट ऑलवेज सीम्स इजी एंड पॉसिबल।
मेरी ये जो सिलेक्शंस हुई हैं या जो मैंने Erasmus की स्कॉलरशिप्स ली हैं, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन अप्लाइंग फॉर द Erasmus स्कॉलरशिप। इससे पहले मैंने फर्स्ट इनटेक में अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ इसी इनटेक में मैंने अप्लाई किया था एंड आई गॉट दिस स्कॉलरशिप्स इन द फर्स्ट इनटेक्स एंड करंटली आई एम इन बेल्जियम डूइंग माय इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंस इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हुई तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी रिव्यू के लिए भेज सकते हैं if there is any issue. Thank you very much. Over to you, Usman. Yes, thank you so much, Jawad. It was such a nice session, and as always, I say that if you want to learn something in letter of motivation, then Erasmus Jawad is like one of the best guys to discuss about letter of motivation. That's why I always ask people to reach out to Jawad for letter of motivations and stuff like that. And now for CV, we have a very nice like girl, and she's also one of our alumni from NAST. And actually, her profile is really nice. Actually, she also worked as a research assistant at University of Cambridge. So I think she is the right person to discuss about CV and experiences. And her name is Ikra Ali Mirza. And now, Ikra, over to you. And yeah, thank you, Ikra. Hello, am I audible? Yeah, you are audible. Okay, perfect. Just give me a second. I will be setting up. Yeah, sure. Okay, so are my slides visible? Yes, it's visible now. Perfect. Okay, so hello everyone. My name is Ikra Ali Mirza. I will be telling you a bit about how you can craft your Europass CV for the Erasmus Mundus Scholarship application. Most often, this is the format that is required by almost all Erasmus programs, unless otherwise mentioned. And sometimes they may mention that you can use any format, which is very rare of them mentioning this, but it would be best to stick to Europass. So I will be further elaborating upon some of the tips that I feel you can incorporate to better draft a good CV for your scholarship application. First off, a little introduction about me. So I just graduated actually in June 2024 from NUST. I completed my undergraduate degree in psychology at the Department of Behavioral Sciences. And ever since I joined NUST back in 2020, the one thing that everyone knew about me, my friends and family, was that I wanted to study abroad. It was kind of a dream. And so from the word go, I knew I needed to do this. And I started working on my profile from day one. So, and how I got the internship at Oxford was basically because I saw a post on LinkedIn about the supervisor who was recruiting students who could kind of collect data in Karachi. So I wrote to her through email that, I'm not based in Karachi, but I can help with the data analysis work or any other task you may have that I could complete virtually. So that is a little story about how I got that opportunity. And I believe that you can kind of create these little opportunities for yourself. So अक्सर हमें इतना straightforwardly चीजें नहीं मिलती. So a good idea would be to approach people this way. And currently I'm completing I just started actually. I'm started my degree at the EMCL program. So I'm in Groningen in the Netherlands for my first semester. So now I will share some tips that I have in mind. I know making a Europass CV is very taxing. मतलब, it took me around 2 weeks just to get my CV, and this was me making the CV initially. So your passport, you add like sections and you add all of that and you decide what information you want. So first off, I would say for each program you should ideally have a different CV because not all of the programs that you're applying to write they may be similar to one another. I can speak for myself that my programs differed a lot because I come from a field जिसमें आपके पास very मतलब काफी opportunities और options are there. Health psychology के relevant programs, there's education psychology. So I had to make different CVs for each program. I applied to 4 programs. So there was like a different CV for each of these unless they were closely related. उसमें भी I had to make adjustments and changes. So it may not be the best thing to hear right now, but if you're applying to 3 programs, you will most probably need 3 different CVs because your CV needs to be very relevant to the program that you're applying to. Now I'll elaborate थोड़ा बहुत on what you should do or what you shouldn't do, but the key aspect to remember
before I begin all of the story, relevancy is very, very important. So go on your program website and not just the program website. Look at the partners that are associated with the program and the partnering universities, the consortium that is offering the scholarship. Go to their specific website and then search your program, the intended program, right? Look into the keywords that they have over there, or what are their outcomes, what are their goals, what kind of students are they recruiting, what kind of work they are doing, and then try to create this relevancy between your work experiences and your educational experiences with what the program is offering. This way, it creates a balanced approach in terms of you presenting yourself as an ideal candidate and convincing them that you are the one they should, give the scholarship to. Some basic information, I would not suggest you add your nationality, your date of birth, or address in the information section, the header of the Europass CV, because all of this is usually required by the program when you're like filling in the application form. It seems redundant. I feel like it wastes space, and you can utilize the space much better because there is kind of a shift between what people suggest as to how many pages a Europass CV should be, but some programs do have a restriction, so a CV of no more than 1 page or 2 page. So over there, especially, you do not have space to be wasting for stuff that is already mentioned elsewhere in your application by you. Um, Instead, what I would suggest is that you can add like a link of your LinkedIn profile on your CV in the header instead of an address. That seems like a much more efficient use of space, right? And towards the end of your CV, this is something I did personally. I compiled all of my certificates and then I sectioned them into different areas based on what they represented. So for my volunteering section, I had a different folder on Google Drive, which included all the certificates. And for my honors and awards, I had another section, another folder on Google Drive. And then I uploaded kind of this main Google Drive link that had proof of everything that I had done. I just felt like it added more structure and more strength because I was presenting the application committee with, proof of things that I've actually done and not just stating or merely mentioning that I've done something. And I did include this at the end of the Yoruba CV. It was not easy to compile everything, but since most Erasmus programs have deadlines in either December to March, right? So now would be a good time to begin doing this. Your undergrad education, I feel, is very important. So mentioning stuff from before that, like your OA levels or your metric FSC, would not hold much weightage unless again it is asked, right? Um, in your education section, add relevant courses that you took that were relevant to the program. Because my program, the one that I'm currently in, had a lot of focus on psycholinguistics or neurolinguistics. So I had taken programs in courses in my undergrad degree in neuroscience or cognitive psychology. So I incorporated those. And it is also important that you mention your thesis topic. Simply mentioning the title of your degree again is not enough, right? So mention your thesis or whatever, even if it's in progress. Write down a tentative name for your project or your final year project, your thesis. My thesis was not remotely related to the program that I got in or to most programs that I was applying to, but I still did mention it because I felt it kind of showed that I have some research capacity, which again, you do need to write a thesis for most programs. So it could be useful to add that. And personally, I think work experience should come after the education section. But what would be useful is to go through your program and see how much weightage they are, they have allocated to each aspect. Some programs focus more on the education side and less on the work experience, but some have it equally. I added the education section before the work experience section. This is usually what I've observed. But over here as well, the key is relevancy. Similarly to the way I mentioned that add relevant courses in your education section to the program over here as well for work experience. Customize, your job title, or the bullet points underneath, especially. Look into the program, look into what they're offering you and other applicants, if they get selected for their work placement or internship opportunities. Go to those companies, create links, see the program objectives. It's really important to create links. And it's also very crucial to be specific in your CV. Generic CVs
will not help. So this is why you need to craft like a different CV for each program you're applying to, because Erasmus programs are very interdisciplinary and multidisciplinary. You will most likely not find like a program that takes like a master of science in clinical psychology, right? Or any other field, master of science in software engineering, electrical engineering. So the program that you will find is very interdisciplinary, and you need to make a difference in your CV to reflect that you are someone who can undertake such a program. For the CV, I followed the STAR framework. This is recommended by some. This was actually recommended for to me by some seniors. So basically, you start for each bullet. You start by um, mentioning the situation. Like this, all of this should be encompassed into like a single sentence, right? You start with the situation, and then you go on to with the task of what you did and what was at hand. Then you go on to the action in terms of what you did and the result, and it would be a good idea to quantify the results. I think it adds more value. Just if I say, okay, I identify a problem that there's a lack of awareness regarding menstrual health, right? So to credit to that, I interviewed some advocates, right? So I mentioned how many advocates I interviewed, kind of workshop I arranged that reached an audience of over around 500 people. So over here, I'm going more than just stating that I did something. I'm going into the specifics and quantifying it. But added numbers to things that you've done could really add value to it. I don't think you should add more than at least 3 bullets per experience, um, unless you do not have many experiences. But this is something that is debatable. Again, you will need to exercise your own judgment कि आप देखो कि cluttered ना लगे, formatting ऐसी हो कि visibility हो, उन्हें मुश्किल ना हो पढ़ने में admission committee को उसमें MOOCs का अक्सर हम सुनते हैं Erasmus Mundus Scholarship वाले ग्रुप में भी. So MOOCs का what I would recommend is only add relevant courses. Again, this will again differ for each program. So since I've decided to apply to around 4 programs, which were all very different from each other. So the summers prior to that, I started working on like applying for financial aid on Coursera, and then because there were all sorts of programs that I was applying to, so I had to kind of show okay, I am interested in them and more than just the traditional classroom setting. So I went to Coursera and I applied for financial aid, completed those MOOCs and then added them. But I only added the relevant ones. So I did not add like courses in neuroscience to the social psychology program I was applying into. Over there, I added courses that I undertook to address like racism in the healthcare sector, for instance. So this is very specific, and it wouldn't make sense to add MOOCs that don't even align with the program or the program objectives, because that would just be wasting space. Publications का अक्सर हम सुनते हैं publications are very important. लोग कहते हैं, but that doesn't mean if you don't have a publication, so it's something bad. What you can do to compensate for that is you add a section of projects, and then for most courses undergrad in most universities, you do need to complete like a final project for the course particularly. It could be something very small scale, but it depends on how you present it. And if it aligns with the program that you're applying to, adding projects would be a very good idea. But if you do not have a publication yet, or if you've submitted it for review, or if it has been accepted, but it hasn't really been published yet, or even if the preprint isn't available, it may be a good idea to just mention it, and then in brackets you can write under review or accepted, and something like that, because publications and projects and all of this really speaks to your research ability, which is very valued in Europe. English proficiency is almost always required in terms of like a standardized test, but on most places, on some places, it can work English proficiency certificate submitted. So again, you need to be very careful to see this from your program website. And also, if you do have like an English proficiency score, you need to tally it with the grading scheme, because accept people who have like an A, they write C2, which isn't really C2, it's C1. So you need to be very careful, because these kind of things can impact your application negatively. From the mainstream section, so Europe on the Europass website, there are some mainstream sections, and then you can add additional sections. Some sections that I recommend are adding your projects, your honors and awards. Maybe you achieved the highest CGPA in some semester, or if you were awarded like a medal or something.
you can add that and other volunteering experiences. So if you feel like you're lacking some work experience, but you have volunteered in similar areas that are relevant to your program, maybe adding those experiences would be useful to your application because it would demonstrate that you're someone who has an interest in whatever the domain of the program is. So other sections you can adjust these according to your preferences and according to what the program demands. So the website of the program and the consortium partners should be, your way to go. And skill hours, not just this, but approach alumni on LinkedIn. Talk to them, ask them, what is valued in the program, what kind of research are the professors doing. You can go on Google Scholar and look into that, and then complete MOOCs or something in those relevant fields because that way you never know who your admission committee reviewer might be. It may be the professor whose research you read up and then completed a relevant course and or decided to volunteer in the field. So you need to be very specific to sum all of this up. You need to be very specific to each program. Do not be generic. Do not pass sweeping statements. Instead, specify what you've done. Going about this quantitatively or qualitatively would be a good idea. Read program requirements very carefully. This is very important because I know someone who had a really excellent profile last year, but they did not see the program that their program required a CV of around 2 pages and submitted a 3-page CV. So their application was screened out in the first stage. It was not even considered, despite them having a very overall strong profile. So do not leave things until the very last minute where you do not read through these requirements carefully. And that is all I had from my side. I wish you all the best of luck with your application. Yeah, thank you so much, Ikra. It was such a nice session on CV, and I hope you guys learned a lot from Ikra. And thank you so much, Ikra. And now we'll also have question answer sessions. But before that, I will just go through the random parameters of Erasmus Mundus Scholarship. I will share my PPT, and I will just discuss and trying to motivate all of you guys to just apply. So let me share my screen. By the way, we will also take questions, but at the end, you will on your mics and you guys can ask. Yeah, sorry for being so rough today. Okay, there is a short journey of me. I'm also from NUST. I'm a civil engineer. I also served as the president of one of the society in NUST Student Club. I also make videos on YouTube, and then I got acceptance in Erasmus Mundus in Waves program. Waves is very different. Don't be like it's just about the waves, but it's about acoustics, it's about waves, it's about vibrations, engineering, sound, and a lot of other dynamics things. So I'm also program representative of my course in Erasmus Mundus Association, and I'm also serving as a campus ambassador of Erasmus Mundus Association at NUST. So small things about Erasmus Mundus Scholarship. To be very honest, Erasmus is the biggest scholarship in Europe. Not only in Europe, I have not seen any other scholarship giving 1,500 plus scholarships to students each year. So Erasmus is the biggest scholarship in the world in terms of numbers. Not in prestige, I can say, but it is one of the most prestigious scholarships. So if you get this scholarship, you will have a lot of international network and people from around the world, and that's the best thing that I like about Erasmus and also some other scholarships too. But Erasmus is very unique. You will get a very different perspective of things. You will be studying in different countries. So Erasmus is a life-changing experience. If you get Erasmus, nothing is more prestigious in Europe at least than Erasmus. So Erasmus is a very nice scholarship. You must try to get it. And all the programs are interdisciplinary. Actually, as all of my speakers were saying, that all the Erasmus courses are very interdisciplinary, and most of the courses are merged from other fields. Like, for example, my course Waves, it's a merge of physics, acoustics, civil engineering, mechanical engineering,
and a lot of other, like one of my colleagues is from electronic engineering and one of my colleagues is from non-destructive testing. So it really depends that how was your research. For example, I'm the only civil engineer in my consortium, so it was very different because I was sure that this program is for me. Not even a single civil engineer they selected before me, and I was the first. And now they have also selected one of my junior in from civil engineering in. So it's very important that how you relate and how you are sure that this program is for you. For example, I had a research in acoustics in my final year project. It was, we developed a vibrating wire strain gauge. Those who are from mechanical engineering or electrical or from civil, they will know that it was more related to electrical engineering and acoustics than on my civil engineering field, because in civil we don't study things like this. So, by the way, a lot of Pakistanis got Erasmus Mundus Scholarship, and this curve is increasing day by day. So, as you can see that number of Pakistanis selected for each year, it's going exponentially. And we are hoping that in this year, Pakistan will have more and more applicants, inshallah. And we are looking forward to it. And by the way, Pakistan is very nice, and most of the Pakistani alumni in Erasmus are very supportive, and they will help you throughout the application. You guys can reach out to them and ask them for review. By the way, a little benefits of Erasmus Mundus Scholarship that all of my speakers were discussing: CV, motivation letters, the more technical things. So I thought to discuss a bit about scholarship. So it's a fully funded scholarship. Your tuition fee will be covered, health insurance, travel allowance. You will get installation costs, travel allowance. A lot of money is involved, but the best part of Erasmus is the networking and the education and the interdisciplinary courses. This is just to help you that you don't need to work on any other things. Then just focus on your academics and try to be a professional. Try to be a expert in the field. So also, European Union wants you to live here, work in their economy. That's why they have no condition that you have to go back to your country. So that's why there are so many people who ask that is there any condition? No, there is no condition, and you can stay in Europe, and European Union wants you to serve in their economy. That's why they are investing on you. So eligibility criteria, it's only for masters. It's not for PhD or bachelors. So you need 16 years of education, and some courses even 15 years of education can also work. So bachelors of 3 years or 4 years, because in India they have 3 years of bachelors, and it's eligible for Erasmus, most of the courses of Erasmus. So also final year students can also apply. There is no age limit. Anyone can apply, and no work experience is required. In most of the scholarships like DARD, Inchevening, and Swedish Institute Scholarship, they need work experience. But in Erasmus, you don't need any work experience. You can apply without work experience. So, and also from any background, either you have background from social sciences, from management sciences, from natural sciences, from medical, from engineering. Anyone can apply in Erasmus. You need to find a course in Erasmus, and there comes the specialist part, like how to search a course. I will discuss, by the way, how to search a course, but it's the most important thing that, as Afifa said, I think that course selection is the most important part in Erasmus. If you have selected the right course for you, then there are like very good chances of yours of being selected. Like how to apply in Erasmus, just if you visit the catalog, there are more than 200 courses now, and just try to figure out your course and try to go out through each course one by one, because each course has a very different name. Because for example, if you go through waves, it looks like it is something related to coastal waves or something like that, but coastal wave has nothing to do with this. It's more related to acoustics, it's more related to vibrations. And when we go through this course, by the way, on the image it looked like it's a computer science course, and there is a lot of coding involved in this, it's true, but it's a more engineering related course. So not be the one who is just going to the home page of a program and just going back that it's not for me. Go through each detail of course, and then you will decide that it's for you or not. Not you. Usually the eligibility criteria is written, and in my course it was written that and also civil engineers can apply. So I applied, so because I knew that this course is for me.
So you can select your course from Erasmus Mundus catalog, and courses from each background are available. You need to find your course, relevant course, and no one can help you in this. Only you yourself can find the relevant course for you. For example, if you are from management background, there are so many people will ask that there is no program or business. You want to do MBA, you will not find courses in masters in electrical engineering, masters in civil engineering, a master's in mechanical engineering, or master's in social sciences. You'll find interdisciplinary courses. So many fields are coming together to make a course. So try to search for that course. And usually the deadline of Erasmus Mundus Scholarship is from October to March. And now Erasmus Mundus Scholarship is open, and you can apply in any course, and apply in only relevant courses. If your profile is not relevant to the course that you're applying, or somehow your experiences or anything, there should be some relevancy. Your goals, your future goals, something must be relevant to the program that you're applying. If it's not relevant, honestly speaking, it will be just a time waste. Relevancy is the key in Erasmus. So there is no program limit. You can apply to any number of courses that you want, but I always suggest students apply with like best of your application, and try to apply in only those courses which are relevant. Don't just apply into 20 to 30 courses and all of those courses are not relevant. Only relevant courses, because Erasmus is all about relevancy. So documents required, it's just the simplest documents: your identity document, passport, letter of motivation, CV. In some of the courses you need IELTS. In most of the courses, I would say, but in some courses, if you don't have IELTS, it will work. But I always suggest to have IELTS, because this adds value to your application. Usually, you require 2 letters of recommendations, and also you need a residence certificate and educational documents like your degree, your transcripts, and all of these documents are not required to be attested at the time of application, but you need attestation at the time of visa. So how to ace interview? As Afifa clearly said, that how to ace interview. So the main part in interview is like, to be very honest, they just want someone to be unique. I have already prepared a very detailed video today on that how to be unique. But I will also explain how. So if you're unique in some way and you can answer them the relevant things, by the way, they are not expecting you to answer each and everything correctly, because they know that you have a limited knowledge in the field. So they don't expect that you will answer all the questions correctly. So don't just panic that I know someone that she said that she was not able to answer the basic math question and they selected her. One of my colleague is also like, why they selected me. He said that why they selected me, I don't know, because uh, his experience of interview was not that good, but his profile was very good. He had, I think, 6 publications in energy building, so he got acceptance in waves. So it's really important to be unique in somehow that it can be anything. I will discuss how to be unique in next slide maybe. But interview is something, to be honest, like, tell them if you don't know something, just tell them that I don't know, I have a limited knowledge on this, but I am able to learn new things in the future. Show them that you can accept challenge and you are open to learning new things, because in Erasmus, I'm sure that in each course, everything is new for scholars from different domains. For example, now Jawad is studying in fire safety engineering, and his background is related to civil engineering. I'm sure that Jawad will be exploring a lot of new things in fire safety, because no one is relevant to the programs. In that sense, we have not studied that courses in our undergrad. So it's important that you are sure that you are answering the questions in a confident way, and you are answering them in a proper way, that they know you are motivated towards the program. So also, as I said, that evaluation committee knows that you have a limited knowledge, so that's the fair part. Does CGPA matter? Yes, it really does matter, but up to a limited extent. CGPA is one of the biggest criteria, but not the only criteria, I would say. And
Yes, and if someone has told you in your university that CGPA doesn't matter, if it's rubbish, honestly speaking, CGPA really does matter when it comes to scholarships. So try to make as much as you can. And if your CGPA is more than 3, it's enough. But I have seen people with 2.4 CGPA and they got acceptance in Erasmus. If someone of you guys know Makhdoom Shahabuddin, he's an anchor person in Pakistan and a renowned anchor person. He was my senior in NAST, and he actually had to repeat so many courses with me. He was 4 years senior than me, and he took he I think he passed his degree in 5 or 6 years. So he had a CGPA of 2.3, and he got an Erasmus Mundus Scholarship in journalism because he had a lot of experience in journalism. So it really depends how unique you are. So CGPA is not the only criteria, but is one of the main criteria. So don't be demotivated if you have low CGPA. So how to win, actually, as my colleagues explained in a very, very detailed way, relevancy is the key. Letter of motivation is the main thing, and your letter of references. No one, I think, discussed letter of references. So letter of references must not be generic, as everything was based by Jawad on this. Generic things will not help you in winning Erasmus Mundus scholarship. At least it can help you winning some other scholarships, but never any scholarship. But in some cases might be other scholarship, but not in Erasmus. So in Erasmus, everything must relate to the program that you are applying. So try to write the names of the program, try to write the companies that you want to work in your letter of motivation. And in reference letter you can ask your professors to write something that about the program, that why, for example, my professor wrote something about structural health monitoring and acoustic emission from buildings. So this helped me because I myself written the letter of recommendation, as we usually do in Pakistan, and my professor just sent it to the evaluation committee. So it really depends that how you write your letter of recommendations. So try to write each and everything of the program, and then just send it to your professor, and then he will send to your committee. And don't be just generic. But if you fail, that's the important thing, actually. Don't stress. So failure is also a part of of your how I say, your success. So you need to fail once in life at least. There's a famous saying: you need to fail at least once in life to succeed many times. So it's really important that if you fail, don't worry. Just Erasmus is not the end of world. There are so many other scholarships that are available, and you can apply into other scholarships too, like very prestigious scholarships like Erasmus. And you should have multiple options, not depending on Erasmus only. So try to explore all the other scholarships too, and apply in all the scholarships that you see and relevant to your programs. So Erasmus is also very prestigious. Around in one of the course, around 1100 students applied, and only 16 to 17 will be getting scholarships, and the acceptance rate is even less than MIT. So in some of the courses of Erasmus, acceptance rate is even higher than MIT, Stanford, and it's very prestigious in some courses. So this is something very important to be realized. And don't forget this, that Erasmus is not the end of world, and there are so many other scholarships that you can apply. How to be unique, that's very important thing. By the way, for example, imagine two students working at McDonald's, and they have to write it in their CV. And how they can write it, it's really important how you write and how you show your things. They can write that he was working as a cashier at McDonald's, and he was dealing with people. One is this way that you can write, and the other way is he was handling the financial transactions of the company, and not writing just the name of your role, but writing about I was handling the financial transaction of my company. I was in the company dealing with other colleagues and presenting the financial sheets or something like this. It's about the way you write. It's not about the way you present, and it's unique thing. For example, in my case, I used to make videos, and I mentioned that thing in my CV, and I think it also helped me in one of the societies of NUST. I was executive at Chadar, I think, and we used to make a video on documentary, actually, on thalassemia patient, and I listed that documentary with a link that I made this
documentary on thalassemia patient to encourage. Thalassemia is one of the most expensive things in medical. So I was very fortunate that I made some videos on thalassemia patient and how you guys can support them and stuff like that. So I mentioned these things. I mentioned my videography channel, and also I used to play guitar. So I mentioned that things because honestly speaking, I mentioned guitar thing because of my program, because acoustics is related to instruments. We also have some courses on musical instruments. So it was really interesting. So how to connect with me? You can connect with me on LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. These are some of my profiles that you can see, and all of the other things. So if you guys have any question, now we'll try to turn on your mic and you guys can ask questions. Everyone is here to answer you, and we'll take only one question per student. So just one question per student, and you guys can ask to specific person and also to everyone. So just a minute, guys. So you guys have to raise your hand and I will make your mic enable and you guys can ask questions. Okay, first is Hobab. Just a second, Hobab. I will allow your mic. Okay, Hobab, now you can speak. Hello, Hobab. Okay, now Jamil. Jamil, can you speak? If you have any question, you have raised your hand. Now, Mariam. Mariam, do you have any question? Mariam Nazir. Okay. Asad, do you have any question? Yes, Mariam. Now your mic is on. You can speak. Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for this wonderful session. It will helps a lot. अच्छा मेरा क्वेश्चन एक तो ये था, एक क्यूरी थी फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीपीए के बारे में कि if you doesn't have good CGPA, like I have 3.47, but जब मैं आप लोगों को देखती हूँ 3.8, 3.9 and 3.7, Not really. तो फिर एक वो माइंड में आता है कि माइट भी सीजीपी अच्छा नहीं है, बट आई ऑल्सो हैव 2 to 3 पब्लिकेशंस. अच्छा, जो मुझे सेकंड थिंग जो मेरे माइंड में आ रही है ये चीज़ कि अब मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, मतलब हम लोग मई में भी रिसेंट पास आउट हुए हैं, तो उसके बाद मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस एक रिसर्च असिस्टेंट, मतलब मैंने जॉब स्टार्ट की थी अपने प्रोफेसर के साथ, उसके बाद फिर मैंने अभी कहीं ज्वाइनिंग नहीं दी, तो इंटर्नशिप्स के अलावा मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो what should I have to add? I'm really confused about it. Okay. I think Afifa is the right person to answer. Afifa, can you answer this question? So yes, I think I can answer this. अच्छा तो Mariam बात कर रही हैं, I think. Okay. So I had a GPA of 3.45. What's your field? वैसे मैंने कभी सुना नहीं है, जब मैंने आप लोगों के देखे, अच्छा आपका मेरा मिस हुआ था जब मैं लेट ज्वाइन किया, उसके जितना भी देखा 3.7, 6, 5 जो सिलेक्ट हुए. नहीं, आप मुझे बताएं what's your background, like bachelor's के stream? Environmental engineering from UET. अच्छा, okay. नहीं, मैंने personally जो मैंने ज़्यादा observe किया है, even though again I would say that GPA is not the only criteria, it's like going to be one of the things that is going to matter. लेकिन मैंने personally ये देखा है कि जो STEM oriented programs होते हैं, they tend to place like a bigger focus on the, like जैसे आपकी भी है tech related, tech तो नहीं, technical तो है खैर. It's not very like humanities का तो नहीं है course ना, तो obviously they will focus on your GPA, but I think कि वो उसकी weightage होगी, but then again अब वो उसको तो आप नहीं change कर सकते, but I'm sure that there are other parts of your application that you have to work on. Also, in the meantime, for example, if you're not working right now, maybe you can take up courses online, but just don't sit idle. मुझे लगता है कि CV में gap नहीं मतलब show करना चाहिए आपको. You should try to fill that gap.
एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करें उससे रेलिवेंट कोर्सेज हों. तो रेलिवेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, I hope that answered your question. Okay, thank you. Yes. And now, I think Hubab, Asad, Hira, you Yeah. guys. Yes. Hi, can you hear me? Yeah, I can hear you, Asad. Hi, Usman. So I've been following you on Instagram for a while now. I did send you a DM as well, but I think maybe you didn't get it because you have a lot of followers and it's kind of landing in the request. So, so my question is a bit more technical, and I would love to connect with you on LinkedIn or maybe on, on Instagram, whatever easy. I just followed you on LinkedIn as well. My name is Asad Nisar. So I'll connect with you later on. I just thought to let you know on here as well. Yeah, Right? sure. I will try to answer your questions on Instagram too and also on LinkedIn. So don't worry. No worries, no worries. Just highlight. I'm already based in Europe. I live in Italy, and I'm Okay. already on a master's program. So my question is a bit more trickier than everyone Okay. else. So I that's why. got it. Good, All right. Asad. I will try to answer your question on LinkedIn. All right. Thank you, Sman. Thank you. Thank you. And now, Hubab, Bakhtawer, Hira, you guys have a question you guys can ask. Okay, Sayyid Ali Imran, your mic is on. You can also ask question if you guys have any question. Ujala Ashraf. Anyone whose mic is on, they can ask question. As I will tap Assalamualaikum. Yes, Bakhtawer. Assalamualaikum. Walaikum Ali Assalam. Imran speaking. Yes, Ali. अच्छा उस्मान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना काफ़ी अरसे से आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर रहा हूँ और आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम यूटी टेक्सला विद सीजीपीए ऑफ 3.51. तो अभी मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ यूटी टेक्सला से. अब आप जिस तरह बात करते हैं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो रेफरेंस लेटर की आप बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो यूजुअली जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको जेनेरिक सा लेटर ऑफ मोटिवेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना देते हैं. तो सर उस चीज़ को हम लोग फिर किस तरह उसको टैकल करें? हम लोग पहले उनको लेटर ऑफ मोटिवेशन एक हम उनको बना दें कि इससे रिलेटेड आप हमें एक लेटर ऑफ रेफरेंस बना दें, या फिर किस इस चीज़ को करें? मैं इमरान इसको क्वेश्चन करता हूँ. इमरान, द थिंग इज कि आपने खुद यूजुअली ऐसा होता है कि पाकिस्तान में प्रोफेसर्स जो होते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग दे से कि आप खुद से लिख के ले आओ एंड दे विल जस्ट साइन इट, एंड इन सम केसेस के प्रोफेसर्स को खुद से भेजना होता है कंसोर्शियम को आपके प्रोग्राम को. तो उस केस में आपको प्रोफेसर की ज्यादा मिन्नत तरले करने पड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको भी अपलोड करना हो तो जस्ट आस्क योर प्रोफेसर टू साइन इट, और वो रीड भी नहीं करते यूजुअली पाकिस्तान में, तो जस्ट आस्क देम टू साइन इट और देन यू विल अपलोड इट योरसेल्फ. तो हर टाइम आपको नया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एटलीस्ट एरास्मस में चाहिए होगा. तो आप एक जेनेरिक प्रिपेयर कर सकते हो थोड़ा सा माइंड यूज करके कि आप कुछ इस तरह से अगर एक ही फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू योर फील्ड, तो फिर आप उसको किसी इस तरह से प्रिपेयर किया करो कि उसमें एरास्मस के कोर्सेज का नाम ना लिखो, बट समहाउ थोड़ा सा जेनेरिक हो, तो देन उसके साथ भी आप जा सकते हो. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. And my second question is after my graduation, I secured a job in oil and gas company. तो सर उस चीज को मतलब कि आप अपने में लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिख सकता हूँ या सीवी में उसको मेंशन करूँ मैं? या आप सीवी में भी लिख सकते हैं और समहाउ आप लेटर ऑफ मोटिवेशन में भी रिलेट कर सकते हैं. एंड वी विल ट्राई टू आस्क, एक ही क्वेश्चन हो सबका, तो क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो. और विल आल्सो हैव दिस सेशन ऑन YouTube. आप YouTube के कमेंट्स में भी करो, तो वहां पे भी जो हमारे सारे स्कॉलर्स हैं इंशाल्लाह दे विल ट्राई टू रिप्लाई. Usman, I add one thing. Yes, sure. I want to add one thing for the letter of recommendation, because many people ask the same question for me. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मैं उसको कैसे करता था. इरास्मस के जितने भी प्रोग्राम्स में मैंने अप्लाई किया है, तो मैंने सबके लिए एक स्पेसिफिक LOR बनाया है. मतलब एक के लिए सब यूज नहीं किए, हर प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक लेटर रिकमेंडेशन बनाता था. लेकिन उसका इजी प्रोसीजर मैंने ये यूज किया था. मैंने अपने सुपरवाइजर या प्रोफेसर से उसके डिजिटल सिग्नेचर ले लिए थे. तो मैं एक लेटर हेड लिया था, एक डिजिटल सिग्नेचर लिए थे. तो मैं लेटर हेड पे खुद राइट करता था उसको सॉफ्ट फॉर्म में, सिग्नेचर पेस्ट करता था, और फिर आपके पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है स्कैंड के नाम से. ऑनलाइन वो आपको
आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको वो प्रिंट करवा के भी स्कैन नहीं करवाना पड़ता। ऑनलाइन राइटअप करें, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें, सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर ऐड करें, उसको स्कैन की फॉर्म में सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए कन्वर्ट करें और उसको यूज कर लें। मैंने अपने होल Erasmus के प्रोसेस में ऐसे ही यूज की है। बेहतरीन, एंड इट्स अ वेरी गुड सजेशन। अगर आप लोग ये करें तो ये भी एक बहुत अच्छी सजेशन है, बल्कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सजेशन है, तो आप इसको भी कर सकते हो। सो नो समवन एल्स जिनका माइक ऑन है, हिरा, खुबैब, मरियम एंड समवन एल्स। इफ नन ऑफ दिस, तो मैं दूसरे लोगों को माइक ऑन करता हूँ। Yes, Sarish, you can also ask question. And now मैंने अली का भी, एक अली है, उनका भी माइक ऑन किया है, and मुबर्रा, you guys can also ask. Hello, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. Jawad, are you listening me? Sorry? I want to talk to Jawad. Are you listening me? Yes, Jawad is here. You can ask directly questions. Yeah, I can listen you. Hi, how are you? I'm good. Please come back soon to Pakistan. Love from Pakistan. Sorry, आपका क्या क्वेश्चन है सुनेरा? Hello. Okay, we can just someone else. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम मुबर्रा. जी सर. सर मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, now it's clear. ओके सर. सर मेरा क्वेश्चन है, 2 to 3 क्वेश्चंस है मेरे, लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ. Yes, I will try. आप कोशिश करें कि एक ही क्वेश्चन करें और somehow, क्योंकि बहुत से करें. ठीक है सर. सर एक्चुअली मैंने अपना जो बैचलर्स है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया था इन 2022. फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई जॉब वगैरह या इंटर्नशिप नहीं मिली थी, तो जिसकी वजह से मेरी सीवी में गैप है. तो मैं उस गैप को मैंने एक रेलिवेंट जगह से, ऑथेंटिक जगह से, जहाँ से वो वेरीफाई हो सकता है आराम से, मैंने वो जॉब एक्सपीरियंस बनवा लिया. तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, मुझे वो ऐड करना चाहिए या फिर मैं इरेलीवेंट ऐसा जॉब एक्सपीरियंस अंदर डालूं जो कि इतना इशू ना हो बाद में? मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है? To be honestly speaking, Erasmus में आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए. दिस इज द क्रंच के आप ऑनेस्ट हैं. तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कोई इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं था, बट दे गॉट एक्सेप्टेंस. क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका एक गैप है जरूर आपका, लेकिन आप इसको डिजिटल लर्निंग से भी रिलेट कर सकती हैं. जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो आपने आंसर किया वो भी यही था कि आप का जो भी गैप है आप इससे कोई कोर्सेज शो कर सकते हैं जो आपने कोर्सेज किए हों कोर्सेरा से और एनीथिंग समथिंग लाइक दैट. तो आप इस तरह की चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें. बट आप ये भी वे यूज कर सकते हैं Erasmus में. डिपेंड्स ऑन कंसोर्शियम टू कंसोर्शियम, बट समटाइम्स होती भी है. दे कैन चेक, दे कैन सेंड एन ईमेल टू योर एम्प्लॉयर, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होती. तो इट डिपेंड्स ऑन कंसोर्शियम, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट. सो एनी अदर क्वेश्चन मोबरा? सर एक्चुअली मेरे पास कोई ज़्यादा कोर्सेज भी नहीं है. मैंने बहुत लिमिटेड कोर्सेज किए हैं क्योंकि जो मेरी फील्ड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेड थे, तो जिसकी वजह से मैं वहाँ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकी. और मेरे पास ओके मुबरा, आप इसको ना इस तरह से फिल कर सकते हैं. ये मैंने लास्ट अपने वेबिनार पे भी आंसर किया था. देखें, फॉर एग्जांपल आपने इसमें कुछ भी नहीं किया, बट यू नेवर डिड कोर्सेज, बट आप समहाउ आप उन कोर्सेज को करें वहाँ पे कोर्सेरा पे. अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं भी होते, बिकॉज नाउ कोर्सेरा ने अपनी जो फाइनेंशियल नीड होती है वो खत्म कर दी है, तो आप उन कोर्सेज को लिस्ट कर सकते हैं अपनी सीवी में विदाउट सर्टिफिकेट्स. बिकॉज सर्टिफिकेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके पास सर्टिफिकेट्स होने ही चाहिए. इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट दैट यू शो कि मैंने ये लिखा है. फॉर एग्जांपल मेरी सीवी में एक कोर्स था हार्वर्ड CS50, क्योंकि वो मैंने यूट्यूब पे लिया था, तो उसका कोई मेरे पास सर्टिफिकेट भी नहीं था. तो मैंने जस्ट लिस्ट किया था अपनी सीवी में कि मैंने हार्वर्ड CS50 कोर्स किया है. इट्स 24 आवर्स कोर्स ऑन CS. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की चीजों को लिस्ट करें अपनी सीवी में अगर आपने की हैं, और उसके लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है. सो आई होप अभी समझ आ गई होगी. अब हम किसी और का क्वेश्चन. जी सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू मुबरा. एंड नो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Usman, this is Serish from Karachi, Pakistan. I have a very generic question because I've been following you guys from a long time, and all my
questions were answered already through your videos. Thank you for that, first of all. And I just have a generic question that is related to visa. So Okay. right now, we as Pakistanis are facing a lot of problems during their appointments, during all of this process. So, like, is there any process that Erasmus Mundus will put us on a state or a number that these guys should be allotted appointments, or how we will be applying for visa if we didn't get it? So what will happen? I mean, right now my whole focus is on the Yeah. visa part, Yes, yes. because other than I- that it was like very clear. Yes, I thank you. I got your question. Any one of us can answer, but I think I can also ask. Okay, Sarish, if you get fully funded Erasmus Mundus Scholarship, not the consortium scholarship, I think 100% visa is guaranteed. So I don't know any Erasmus scholar who got Erasmus Mundus Scholarship. I know some people who got a consortium scholarship and they couldn't get visa, but I don't know any Erasmus Mundus scholar who was rejected in visa. So it's even you'll get any European country visa, France, Spain, and even Germany, who has a lot of appointment issue, and also of Italian visa. No one is getting Italian visa at the moment, but all of the Erasmus scholars who got Erasmus Mundus scholarship this year, all of them got Italian visa. So it's very different from other student treatment, because European Union जो है पाकिस्तान में they are very supportive, or they communicate a list of Erasmus Mundus scholars throughout their embassies. So बहुत easy हो जाता है आपका वीजा लेना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीजाज में. All right, thank you. Okay, thank you. And no, someone else, you guys can also. Walaikum Assalam, Ali. Hello. Yes, no, Ali सर can मेरा ask. ये क्वेश्चन है. Yes, Ali. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने अपने वीडियो में मेंशन किया था कि कुछ प्रोग्राम लो सीजीपी के बच्चों को भी उठा देते हैं, तो हम प्रोग्राम की सर्च हिस्ट्री कैसे सर्च कर सकते हैं? अच्छा अली, इसमें ना जवाद ज्यादा बेहतर क्वेश्चन आपको आंसर कर सकेगा. मैं आपको जवाद कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? या अली, आप ना उनकी प्रोग्राम्स की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स में और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी गिवन होता है हर वेबसाइट पे ना, उनके प्रोग्राम्स की वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देखें कि सीजीपी को कितनी वेटेज दी गई है और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे कितनी वेटेज दी गई है. जैसे मैंने एमबिल्ड के आपको दिया था मैंने एग्जांपल के, उसमें सीजीपी की वेटेज बहुत कम है, इसीलिए चाहे वो यूईटी का टॉपर हो चाहे वो नस का टॉपर हो, उसमें उसकी सिलेक्शन नहीं होती. बजाय इसके कि जो एक्सपीरियंस जिसके पास उस फील्ड का 5-6 साल का था, उनकी सिलेक्शन के मार्क्स ज्यादा थे. तो ऐसे प्रोग्राम्स को आप लोग उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया की मार्क्स की बेस पे आपको विजिट करके ना उनकी वेबसाइट पे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो. Yes, and Ikra, would you add something? Yes, sir. Sir, I'm also a civil engineer from UET, current in 5th semester. तो अभी मैं 5th सेमेस्टर में हूँ, तो मेरा CGP 3.2 है. तो क्या मुझे कोई सब्जेक्ट रिपीट करना चाहिए इसको इंक्रीज करने के लिए, और आप इस लेवल मुझे क्या सजेशन देते हैं? Yes, Jawad, I think would you like to suggest? आपका CGPA कितना है? 3.2. 3.2 in 5th semester. Do not repeat courses. You can increase your publications or you can participate in international conferences, क्योंकि रिसर्च एक्सपीरियंस के काफ़ी मार्क्स होते हैं, और जिस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हो, एक तो उसमें पेपर्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह विजिट करो, और सेकंड उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है ना सिर्फ उस डोमेन में लेकर आओ, देन यू कैन कवर योर सीजीपीए. I hope आंसर मिल गया होगा अली को. और now we can take someone else question. Yes, Vaiza, yes, you can answer. So I'm from ComSets and currently I'm doing my BBA. Okay. So my question was, since we don't have the requirement of submitting a thesis or a research paper by the end of the degree, or हमें बस एक internship report होती है, like we just have to do an internship. So what are what are some of the things that can complement our profile, जो कि जैसे उन students के साथ जो जिनके research publications होते हैं या जिनके thesis होते हैं? I think both of the Afifa and Ikra can answer question. Ikra, would you like to add something? Yes, I will get into this. So basically, even in my program, there are people who did not complete a thesis, right? So उनके experience से जितना what I've understood and what I think personally is कि for each course आपका कोई project वगैरह था that
बेशक स्मॉल स्केल हो, बट दैट इज समथिंग दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट। इंटर्नशिप जो आपके वो तो वर्क एक्सपीरियंस में आ गई, लेकिन आपका अगर रिसर्च कैपेसिटी है उसके लिए आपने कुछ प्रेजेंट करना है, तो आपने किसी कोर्स में कोई ऐसा पेपर लिखा हो, तो वो आप प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी के अंदर यू कैन लिंक दैट विद योर इंटेंडेड प्रोग्राम, ताकि किसी से पता चले कि आप मतलब रिसर्च डोमेन में भी हो। Not something that may be equivalent to a thesis, but still there is something, and I don't think that adds negatively to your profile, because her university at the end of the day अपनी requirements है. If you do not have a thesis, there's not like इसमें आपका कसूर नहीं है, you can't do anything about it, but you can compensate for it through your projects for other courses you may have had during your degree. Yes. Afifa, would you? एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से लिखवाते हो, सो कैन वी गेट दोज लेटर्स फ्रॉम और people whom we have worked with, या फिर जिनके साथ हम एक्सटर्नली कोई प्रोजेक्ट्स किए हों या कुछ? Okay, yes, Faiza, you can. Anyone with whom you have worked and they are related to either industry or academia, you can ask them for letter of recommendation. All right, thank you. Okay, so anyone else who want to ask? Yes, welcome, Salam. Hello, can you guys hear me? Yes, I can hear you. Okay, Usman. My name is Janzeb, and I was graduated in 2023 from Zebis University, Islamabad, and did my bachelor in accounting and finance. Okay. And I have an almost 17 to 18 months experience in accounts in Neatel, as well as one of NGO Talimabad. Okay. So I just want to know that is there any courses in Erasmus, like मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कोई कोर्सेज फाइंड आउट करने का कि जो मेरी अकाउंट्स या फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें और मुझे बता दें, और मेरा एक्सपीरियंस उसमें काउंट हो सकता होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें मुझे बता दें, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है ढूंढने की। It really आपको ना थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको इस तरह से कोर्स नहीं मिलेंगे कि मास्टर्स इन फाइनेंस या मास्टर्स इन, आपको थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी होना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कोर्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड सो मेनी पीपल फ्रॉम बिजनेस अप्लाई देयर एंड दे गेट एक्सेप्टेंस। सो आपको मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है, बहुत से लोग इस तरह के ह्यूमन राइट्स में चले जाते हैं विद एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट। सो इट डिपेंड्स कि आपने थोड़ा सा आप कोर्स को, अपनी कैटलॉग को दोबारा से एक्सप्लोर करो। नो वन कैन टेल यू कि आप किस कोर्स में अप्लाई करो एक्सेप्ट यू, बिकॉज आप अपने एक्सपीरियंसेस को सबसे बेहतर जानते हो। अभी आपने जैसे एक्सपीरियंस बताया वो जस्ट एक एक्सपीरियंस होगा, आप किसी एक कोर्स को उठा के उसके ऊपर आप एरास्मस में अप्लाई कर सकते हो। सो आपने कोई एक कोर्स पढ़ा हो, वो इस एक प्रोग्राम से रिलेटेड हो, यू कैन जस्ट समहाउ पिच द आइडिया द वे अफीफा डिड। सो इस तरह से आप समहाउ रिलेट करो। अब अफीफा का जो कोर्स था वो बहुत डिफरेंट था, ई गवर्नेंस के रिलेटेड था, एंड शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। सो समहाउ एक कोर्स की बेस पे एंड देन अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर और समहाउ ऑनलाइन कोर्सेज, तो इस तरह से आप उस प्रोफाइल को बेहतर कर सकते हो। तो इस तरह से आप चीजों को लेके चलो, थोड़ा सा और कैटलॉग को एंड ट्राई टू सर्च कि अगर आपने किसी कोर्स के रिलेटेड कोई एक दो कोर्सेज पढ़े हों तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे ठीक है, मतलब स्पेसिफिक मुझे अकाउंट्स या फाइनेंस का हेड नहीं मिलेगा, मुझे और स्पेसिफाई होना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा स्पेसिफाई होना पड़ेगा। Yes, exactly. And now someone else can ask question. Thank you. Hello, can you hear me? Hello, yes, I can hear you, Zainab. Zainab, you can ask. Yes, I just wanted to ask, you mentioned before, like we should mention different things or skill in your CV. So it should be in accordance with the course or program you are applying in, or a different skill not relevant is also a plus point. Anything that make you unique, honestly speaking. Uniqueness is something के आपकी कुछ भी चीज हो सकती है, बट अगर हाँ वो प्रोग्राम से रेलिवेंट है। फॉर एग्जांपल आई वाज गिटारिस्ट, सो मेरे वो प्रोग्राम से बहुत रेलिवेंट थी, तो पीपल वेर इंटरेस्टेड इन इंटरव्यू कि आप मतलब इलेक्ट्रिक गिटार यूज करते हो या लाइक सिंपल गिटार, और एम्पलीफायर कभी यूज किया है। सो इस तरह की चीजें, यू नो, पीपल गेट इंटरेस्टेड इंटरव्यू। सो अगर आप कुछ इस तरह की चीजें करते हो और वो प्रोग्राम से रेलिवेंट भी हो तो it's well and good. And also Jawad would like to add something, or Afifa?
Like I am a student of pharmacy, but I'm also doing food blogging on Instagram. So that can be a plus point or Yes, something exactly. like that, or it's a different niche. It's very relevant. You have to make something relation, because food में अगर आप somehow food blogging कर रही हैं, तो you can relate somehow अगर कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो. Even I used to write blogs in Express Tribune, and some of the blogs are still available, but all of the blogs are in fact available. So तो आप मैं blogging लिखता था water resources के बारे में, तो मेरे अभी सारे blogs listed हैं. तो I wrote all of these blogs in my CV, और मैंने लिंक से कनेक्ट किया उनको, तो really helped me I think. So this really help you because ये आपकी writing skills बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. So I hope ज़ैनब आपको आइडिया हो गया होगा, and now we'll ask someone else to speak. Hello. Yes. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you one by one. Yeah. Yes, you can speak. Hello. I have a question. My name is Khadija. Yes, Khadija. Thank you for accepting my joining request. Actually, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर देती हूँ. मैंने 2021 में बैचलर्स किया था इन मार्केटिंग, और मैंने 2024 में अभी रिसेंटली अगस्त में मास्टर्स की डिग्री ली है फ्रॉम IBA पंजाब यूनिवर्सिटी. Now my question is, should I mention this? और अगर मैं मेंशन करती हूँ तो मैं किस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ पॉजिटिवली कि ये मेरी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करे? Yes. Jawad? Yes. Yes. Anything else to add, Khadija? Yes. The other thing is कि ना मेरे बैचलर्स में कोई पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना ही मेरे मास्टर्स में कोई थीसिस था. तो ना मुझे बैचलर्स में थीसिस करने का मौका मिला, ना पब्लिकेशन थी, ना मास्टर्स में. तो मैं जिस तरह से जवाब ने बताया कि लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि यहाँ पे पब्लिकेशन आनी चाहिए, यहाँ पे थीसिस का आपको बताना चाहिए, तो उस गैप को मैं किस तरीके से पॉजिटिवली फील कर सकती हूँ, ये भी बता दीजिएगा. थैंक यू. ओके जवाद, आंसर करेंगे आप इसको? मैं उसको इस तरह से आंसर करूंगा. यहाँ पे जो यूरोप में क्रेडिट आवर का सिस्टम है और जो पाकिस्तान में है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. यूरोप में यूज़ होते हैं ECTS क्रेडिट्स, जो कि डिफरेंट है पाकिस्तान से. जैसे इरास्मस के कुछ प्रोग्राम्स हैं, अगर मैं उसके क्रेडिट आवर्स को पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करूं तो वो बनते हैं 5 साल का आपका होना चाहिए बैचलर्स. तो आप कुछ सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं. इट मीन्स मैं जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पाकिस्तान से ली है, मैं उसकी बेस के ऊपर उसमें अप्लाई नहीं कर सकता. लेकिन अगर मैंने मास्टर्स किया होता सिविल इंजीनियरिंग में, तब मेरे पास 6 ईयर्स के क्रेडिट आवर्स होते हैं. देन मैं इनके 5 ईयर्स के कोर्स की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर सकता हूँ. तो अगर आपके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके ECTS क्रेडिट आवर्स आपके बैचलर्स के थ्रू मैच नहीं कर रहे, तो आप उसको मास्टर्स के थ्रू कर सकती हैं. बाकी अगर आपकी डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स में उसमें पब्लिकेशन का कोई रोल नहीं था, वो मोर और लेस प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप था, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है. वैसे पब्लिकेशन वाला जो चीज़ है वो हर फील्ड में ही है, वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू कैन डू पब्लिकेशन और एटलीस्ट यू कैन अटेंड कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू योर प्रोग्राम्स. कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेशन करना ही इटसेल्फ एक रिसर्च एक्सपीरियंस है. तो आप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ऑनलाइन, फिजिकल, और उसके अलावा आप कोर्सेज कर सकती हैं कुछ, तो वो आई गेस कवर कर लेंगे आपके उस पोर्शन को. अच्छा, जो अगर आप कह रहे हैं कि 6 इयर्स का बैचलर्स फिल कर देता है उस गैप को, अगर कुछ जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अपना मास्टर्स की डिग्री को मेंशन ना करूँ? मास्टर्स आपका अगर आप मास्टर्स ऐड नहीं करेंगे तो गैप आएगा. आपने उस दौरान वर्किंग किया है कहीं? एक्चुअली मैंने एग्जीक्यूटिव MBA किया हुआ है और मैं साथ लॉजिस्टिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जॉब कर रही थी लॉजिस्टिक्स कंपनी में, फ्रेट फॉरवर्डिंग की. तो एज पर माय एक्सपीरियंस मेंशनिंग मास्टर इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ कई Erasmus स्कॉलर्स हैं जिनके 2 मास्टर्स भी हैं और वो 3rd मास्टर्स कर रहे हैं. तो इट ऑलवेज गुड टू मेंशन योर मास्टर. तो मैं इसको किस तरह से पॉजिटिवली एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपने मास्टर किस फील्ड में किया है और किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रही हैं. इफ इट्स रेलिवेंट और इंटरलिंक है तो आप लोगों का ये बेनिफिशियल है. अगर वो मास्टर किसी और फील्ड में है, आप किसी और डोमेन में अप्लाई कर रही हैं, देन यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू मेंशन इट, और फिर आप स्किप भी कर सकती हैं. और जो क्राइटेरिया है क्रेडिट आवर्स का, ECTS का, उनको मैं किस तरह से मतलब कर सकती हूँ आप मैनेज? ECTS के क्रेडिट आवर्स आप देख सकती हैं कि आप गूगल सिंपली करें कि ECTS क्रेडिट आवर्स टू पाकिस्तानी क्रेडिट आवर्स, वो आप कन्वर्ट कर लेती हैं.
ऑलमोस्ट 1 ईयर में हमें 60 क्रेडिट आवर्स ECTS के मिलती हैं, जो मतलब अगर पाकिस्तान में एक सेमेस्टर किए है इसका मतलब होता है 60 ECTS। तो अब उसको आप कन्वर्ट कर सकती हैं अपने नंबर ऑफ ईयर्स पे। थैंक यू। Yes, Khadija, I think आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। And now someone else can speak. अस्सलाम वालेकुम sir. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Sir, my name is Shabana Sultan and I want to ask you one question. Yes, Shabana, you can speak. Sir, actually मैंने आपसे पूछना था कि आपने जैसे कि सेशन में बताया कि यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कितनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर इरोस्मस मुंदस की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 ईयर एक्सपीरियंस ह्यूमन राइट में मांगा हुआ है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हर फील्ड के लिए ये ज़रूरी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि जरूरी नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट आई थिंक आउट ऑफ 192 कोर्सेज ओनली 2 कोर्सेज नीड वर्क एक्सपीरियंस एज द रिक्वायरमेंट. The one is related to civil engineering and architecture, and the one is the one you mentioned in human rights. तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। और 2 कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको स्पेनिश आनी चाहिए। तो अगर प्रोग्राम की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको एरास्मस एज अ जनरल स्कॉलरशिप के साथ लिंक नहीं कर सकते, उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा ह्यूमन टू अप्लाई। Yes, ठीक है, यानी कि सर हमें अपने प्रोग्राम के रिलेटेड देखना है वर्क एक्सपीरियंस, नॉट अ जनरल। यस, नॉट अ जनरल। एरास्मस में ओवरऑल सिर्फ उन 2 कोर्सेज को निकाल के कहीं भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सर एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस का है, मैंने BBA किया अभी फ्रेशली। Yes. और आई हैव अ 3.7 CGPA, also 1 publication and 2 international conference. Yes. And 7 IELTS. But sir, I am confused because there are so much program in Erasmus Mundus Scholarship. आपने जैसे कि अभी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात की थी कि ये थोड़ा रेलेवेंट है मैनेजमेंट से, तो सर अगर हम कोर्सेरा से मैनेजमेंट के या फिर जो वहाँ पे कोर्सेज शो हो रहे हैं उनके रिलेटेड अगर कोर्सेज ले लेते हैं तो क्या ये बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए? Yes, super beneficial. जितने आपकी कोई भी ऐसी चीज हो जो रिलेट कर रही हो प्रोग्राम से, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस कोर्स हो, इंटर्नशिप हो, इट्स रेलेवेंट और वो आपको सपोर्ट करता है। और सर यहाँ पर रैंकिंग तो नहीं करती, यानी यूनिवर्सिटीज हैं लाइक नस्ट और डम्स? रियली डिपेंड्स, जैसे जवाद ने एक्सप्लेन किया ना, इट रियली डिपेंड्स कि वो आप सबसे पहले ये क्लियर करें कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करें उनका एक एलोकेशन की होती है कि कितनी रिक्वायरमेंट किस चीज की है। सम ऑफ द कोर्सेज इन मोस्ट ऑफ द एरास्मस कोर्सेज उन्होंने लिस्ट किया होता है कि इतनी परसेंटेज यूनिवर्सिटी रैंकिंग की है, और कुछ ने यूनिवर्सिटी रैंकिंग की परसेंटेज लिखी नहीं होती, लाइक दे डोंट बॉथर के कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से आ रही हो तो उनका कंसर्न नहीं है रैंकिंग से। सो इट डिपेंड्स आपके कोर्स पे, उनकी आप रिक्वायरमेंट देखें कि उन्होंने किस चीज को कितने मार्क्स दिए हैं। अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग को कुछ मार्क्स मिले हुए हैं तो देन मैटर करेगी, ओवरऑल वैसे मैटर नहीं करता। Okay, sir, thank you so much. There is so amazing session. Okay, thank you, Shabana. And someone else? Yes, you guys can speak. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, Okay. yes. Can I go? Question? Yes, yes, you can. Laiba. जी क्वेश्चन पूछना था रिकमेंडेशन लेटर से मुतालिक कि हमें जो है रिकमेंडेशन लेटर में हमें यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप का नाम मेंशन करना लाजमी है, या हम बस जनरली बताएंगे कि हम मतलब जैसे मॉलिक्यूलर में करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लिखेंगे? अभी इस क्वेश्चन के जवाब ने आंसर किया था कि जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को मेंशन करें, आप कर सकती हैं। इट वुड बी मोर स्पेसिफिक, कर दें तो बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा आपका टुवर्ड्स प्रोग्राम अलाइन होगा LOR, उतने ज्यादा अच्छे चांसेस हैं आपके। बट लाइक इट मस्ट नॉट बी जेनरिक LOR। तो LOR जितना स्पेसिफिक टुवर्ड्स प्रोग्राम होगा उतने ज्यादा अच्छा है, बट आप उसको हर बार आपको टीचर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट गेट द डिजिटल सिग्नेचर और आप खुद से चेंज करके उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Okay, thank you. Sir, my name is Junaid. Assalamu alaikum. Yes, Junaid, my name is, we'll start. Junaid. Yes, Junaid. Yes, I hope you are doing good. दरअसल सर मेरा सवाल ये है कि मैं जो है नेक्स्ट ईयर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ मास्टर्स इन इटली इन स्मार्ट इंडस्ट्री। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो ना एरास्मस के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो शुड आई मेंशन दैट विद गुड इंटेंशन इन मोटिवेशन लेटर एटसेट्रा, और मैं क्या वो चीज़ उसको मेंशन कर सकता हूँ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ अभी और फिर एरास्मस को मैं प्रायोरिटाइज बनाऊंगा? तो इस पे आप क्या कहेंगे? Okay, I would like to कि जवाद, इकरा और अफीफा, आप लोग आंसर करना चाहेंगे क्वेश्चन? Something to add? मैं आंसर करता हूँ।
आसमान मैं आंसर देता हूँ। यहाँ पे मेरा एक इरास्मस फेलो ही है। ओरिजिनली वो पाकिस्तान से है, लेकिन वो 2 साल पहले जर्मनी गया था पाकिस्तान से, और जर्मनी में आप ब्लॉक अमाउंट के बेस के ऊपर वो वहाँ पे मास्टर्स कर रहा था। देन उसने जर्मनी से अप्लाई किया इरास्मस पे, जिनकी पहली यूनिवर्सिटी बेल्जियम की है। तो ही गॉट द इरास्मस स्कॉलरशिप, लेकिन अब वो पाकिस्तान के कोटे से नहीं और यूरोप के कोटे से जर्मनी से आ रहा है। एज ए पाकिस्तानी कैंडिडेट नहीं, एज ए जर्मन कैंडिडेट वो वहाँ से आ रहा है। तो उस केस में आपका स्टाइपेंड का अमाउंट भी चेंज हो जाता है। अब उसका स्टाइपेंड, उसको ट्रैवल अलाउंस कम मिला है। देन उसने अपना जो मास्टर है वो शो किया था। जब उसके इरास्मस पे सिलेक्शन होगी, उसने वो मास्टर फ्रीज करवा दिया है। और अगर आपका तब रिसर्च वर्क चल रहा हो तो फिजिकली आपको वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना पड़ता, आप अपना रिसर्च वर्क ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू भी अपने सुपरवाइजर से कर सकते हो। तो इस केस में आप अपना मास्टर शो भी करवा दो तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। यस, आई होप आपको आइडिया हो गया होगा जुनैद। जी दरअसल मेरी क्वेश्चन यही था कि मैं जो मोटिवेशन लेटर या सीवी में ऐड करूं, और अगर चाहे ना करता हूं तो वो उनको पता चल सकता है कि मेरा वीजा लगा हुआ है ऑलरेडी। Okay, they don't bother about your visa or stuff like that. इसमें ना क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन आती है सारी वो प्रोफेसर्स के बाद आती है, पास आती है, तो उनको इस तरह का कोई आपका वो कंसर्न नहीं होता। दे जस्ट वांट समवन कि जो उनके प्रोग्राम से अलाइन कर रहा हो और वो लाइक वैलिड हो कि उसको सिलेक्ट कर अच्छा, सके। वो मास्टर्स के प्रोग्राम से मेंशन ऑलरेडी करना अलाइन। ज्यादा बेहतर है। यस जवाद यू कैन। मैं कह रहा हूँ मेंशन करना ज्यादा बेहतर है। इट वुड ऐड मोर पॉइंट्स टू योर यस एग्जैक्टली। एप्लीकेशन। और मैं यहाँ पे एक और जवाब की बात मैं ऐड करना चाहूंगा जुनेद, ऑल ऑफ द पीपल हु आर इन करंटली यूरोप, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इवन इन टर्की। द थिंग इज, आप अगर एरास्मस के फ्रेमवर्क को देखें तो 2 कंट्रीज होती हैं, प्रोग्राम कंट्री एंड पार्टनर कंट्री। तो पाकिस्तानी जितने भी होते हैं वो एज अ पार्टनर कंट्री कंसीडर होते हैं। लेकिन अगर आप 6 मंथ समहाउ आप यूरोप में रह लें, जैसे आपने रह लिया होगा, तो देन आपको वो एज अ पार्टनर कंट्री कंसीडर करेंगे। और पार्टनर कंट्री में कंपटीशन बहुत कम होता है एरास्मस में। एरास्मस में अगर 16 to 18 स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ये मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, बहुत लाइक मजे की बात है एक। तो अगर आपने टर्की में, इसलिए आपने देखा होगा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो टर्की से अप्लाई करते हैं, 1 साल टर्की में पढ़ लेते हैं, वो उनकी सिलेक्शन बहुत ज्यादा होती है। एंड ऑल्सो दोज पीपल कि जो हंगरी में बैचलर्स करके आ चुके होते हैं, क्योंकि उनको उनका पाकिस्तानीज के साथ एज सच कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा होता। उनका पार्टनर कंट्रीज और प्रोग्राम कंट्रीज का कंपटीशन होता है मेनली, क्योंकि प्रोग्राम कंट्रीज से उन्होंने अगर टोटल 16 स्कॉलरशिप्स हैं तो अराउंड 20% to 30 to 40% आई थिंक उन्होंने प्रोग्राम कंट्रीज को देनी ही है। तो द स्टूडेंट्स फ्रॉम जर्मनी, इटली, दे डोंट अप्लाई फॉर एरास्मस यूजुअली। तो यहाँ पे इस तरह के स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी या इंडियंस यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे होते हैं, तो वो उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरे कोर्स में भी अभी इसी तरह से हुआ। दे सिलेक्टेड 2 guys फ्रॉम पाकिस्तान एंड 1 पाकिस्तानी हु हैड अ बैचलर्स इन हंगरी, तो उसको एज अ पार्टनर कंट्री में कंसीडर किया। तो जैसे जवाद ने कहा कि उसका स्टाइपेंड भी डिफरेंट है और उसके साथ थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं, बट ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस वही होता है। तो ये चीज थी। आई होप आपको आइडिया हो गया कुछ जुनेद। अब हम किसी और का क्वेश्चन लेंगे। ओके, Hello. खुबैब, यस आई थिंक ओके यू गाइस कैन स्पीक एंड आई हेलो यस Can I go? यस यू कैन। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस सेशन। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैंने लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया था, अपना ग्रेजुएशन किया था इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, उसके बाद मैंने 1.5 इयर्स हो गए, इसमें मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस लाइक इन टर्म्स ऑफ जॉब नहीं है, बट आई हैड माई ओन बिजनेस। बट मसला ये है कि मैंने इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में डिग्री की थी और अब मैं एक लाइक बिजनेस कर रही हूँ। सो कैन इट बी रिलेटेड, या मैं अपना इसको किस तरह से रिलेशन शो करूँ? मेरी लाइक CGPA थी 3.78 उसमें। सो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस प्रोग्राम की तरफ जाऊँ। लाइक उसमें मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और इसमें मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं और कोर्सेज हुए हैं लाइक टुवर्ड्स इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। सो कैन यू गाइड मी अ Yes, Jawad, would you like to add something to her? Yeah, you can, if there is a gap in your degree and during the application process, you can mention it as a freelancer कि आप content writing वगैरह करती रही हैं इस केस में, क्योंकि उस केस में कुछ आपको कंपनी या आपको कोई राइटिंग एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए, तो आप फ्रीलांसिंग मेंशन करके आप उसको कवर कर सकती हैं। बट अगर लाइक मैंने बिजनेस किया हुआ, बिकॉज बिजनेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, तो उसको किसी तरह मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ या नहीं? बिजनेस किस चीज में किया हुआ आपने?
मेरा खुद का स्मॉल बिजनेस है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, सो दिस इज आप वो भी मेंशन कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो यूरोप में होते हैं उनके गोल्स में भी एंटरप्रेन्योरशिप्स और ये लीडरशिप्स को वो काफ़ी फोकस करते हैं। तो अगर बिजनेस किसी ने अपना खुद डेवलप किया हुआ है तो उसके काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग भी मेंशन कर सकती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकती हैं। तो इंग्लिश की डिग्री में लाइक एप्लीकेबल होगा, लाइक लैंग्वेज रिलेटेड डिग्री या सोशल साइंसेज में बिजनेस आपने हाँ, किया हुआ है तो आप बिजनेस मेंशन कर सकती हैं। बिजनेस इटसेल्फ एक मतलब फील्ड है, वो आपने किसी में भी किया हो तो बिजनेस स्टार्टिंग वाले स्टेप सेम है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, बिजनेस स्टार्ट करना, तो वो आपने जिस भी डोमेन में किया है इट ऑलवेज बी द बेटर ऑप्शन। सही है, थैंक यू सो Okay, मच। okay. Yes. Okay. No. Walaikum assalam. Assalamualaikum. Can मेरी I? आवाज आ रही है? Yes, am I आपकी आवाज आ रही है. Okay, one by one, guys. जो जिन्होंने सबसे पहले बात की थी, yes, आपकी आवाज आ रही है. अच्छा, पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और दूसरी बात, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी में अप्लाई कर रही हूँ, तो उनके जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उनमें उन्होंने लिमिट बताई हुई है कि 500 वर्ड से एक्सीड ना करे। अब चूंकि मेरे पास एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने का एक्सपीरियंस है, मैंने पोस्टर प्रेजेंटेशन की थी और उसमें मैं अपने ग्रुप की लीडर भी थी, लेकिन उन्होंने चंद एक चीज़ें बताई हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट बताया, आपके रिसर्च प्लान्स और आपका फर्दर स्टडी के बाद क्या आपके प्लान्स होंगे, क्या परस्यू करेंगे करियर एज अ, और उसके बाद आप ऐसे 2-3 चीजें बताई हुई इन्होंने, जो 500 वर्ड में पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये जनरली कहा जाता है कि आप लीडरशिप स्किल्स भी अपनी उसके अंदर जो है ना मेंशन करें, लेकिन अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं लीडरशिप स्किल्स कहाँ पे मेंशन करूँ, क्योंकि 500 वर्ड से ऊपर भी एक्सीड नहीं करना, और जो उन्होंने चीजें बताई हुई हैं वो भी सारी मैंने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में Okay. लाइक Okay. मेंशन कर दी। मुझे आपका क्वेश्चन तो आ गया, and I would ask Ikra. Ikra, are you here? Ikra, can you answer this question? कि किस Yes, तरह yes, से? yes. Yes, Ikra. Yes. So basically word limit में I would suggest कि आपने एक्सीड नहीं करनी, और जो उन्होंने बातें कवर करने को कही हुई हैं वो जरूर कवर करनी है। जो आप एक्स्ट्रा चीजें which you think can add value to your profile, जैसे कि लीडरशिप, तो आप सीवी में डालो। आप उसको अपने टॉप की और रिकमेंडेड उनसे कहो कि इस तरह मैं चाह रही हूँ कि जैसे अगर जो लीड किया किसी ने, आपको सुपरवाइज किया, वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देखें, आस्क देम कि वो आपकी ये लीडरशिप एबिलिटीज पे एक पैराग्राफ आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में डाल दें, बिकॉज हर चीज कवर करना लेटर ऑफ मोटिवेशन में इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, सो यू विल हैव टू स्ट्रेटेजाइज के कुछ चीजें आप सीवी के लिए एलोकेट कर दो, तो जो आप लेटर ऑफ मोटिवेशन में नहीं डाल सकते बट यू थिंक आर इम्पोर्टेंट है, उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में किसी तरह इनकॉर्पोरेट करवा लो। Yes. Got it. तहीम, आपको आइडिया हो गया होगा? जी, मुझे आइडिया हो गया। मैंने अपना टीम वर्क जो एक एक्सपीरियंस है वो अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन में डाला हुआ है, लेकिन अगर मेरा लीडरशिप का नहीं मतलब स्पेस बन रही, तो फिर मैं उसको अपनी सीवी के अंदर कर दूं, लाइक शो कर दूं। Yes, exactly. तहीम, I hope आपको आइडिया हो गया होगा. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay. Now we'll. Assalamualaikum. Walaikum assalam. I hope you all doing well. Thank you very much for this amazing session. My question is basically related to what's the best time to apply for any scholarship. Like, I'll explain about my background. I am currently doing 7th semester in Bachelor's Physics at Kadazim University. Also, I'm doing an internship side by side. My current CGPA is 4/4, alhamdulillah, till now. Would you guys suggest me to work on my documents now, or should I wait to once graduated? Because as Jawad Bashir mentioned earlier, that your statement of purpose would require a lot of time. Also, you would need to rewrite or debug it after little intervals. So, or should I just focus on my CGPA for now? So, what you guys suggest for it? I will ask Jawad to answer, but I don't think you don't need to focus on your CGPA now, so you are more than enough. Okay, Jawad, will you take? The last year of your bachelor's is the perfect time to apply for the scholarships. When you are in 7th semester, you can apply for it. Basically, when they select you, they need during the application process, they just need your transcript. If you are in 7th semester, you can apply in that intake. But when you are selected and you need the visa, until now you need your degree. So that's the main process.
So when you are 7th semester, you can do IELTS and you can apply for the scholarship. Okay. All right, thank you. Also, if I may add, I applied in my 7th semester. Time management आपको करनी पड़ेगी. तो उसमें you will have to see कि आप what 12th summer से मतलब program shortlisting at least personal experience में I can tell तो वो start की थी. And then IELTS मैंने सितंबर अक्टूबर में दे के फारिग किया था ताकि next upcoming month सिर्फ personal statement, letter of motivation और CV वगैरह पे थे. But yes, considering your profile, you can apply. It is a good like कोई hurts नहीं. It is a good time for you to apply. You are eligible to apply in your city. Yes. I hope मरीम आपको आइडिया हो गया होगा. Yeah. Thank you so much for your kind words. Thank you. Okay. Khadija, are you okay? So okay. Yes. Hello. Amna. हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये सवाल करना था कि मैंने अपना बैचलर कंप्लीट किया है आर्किटेक्चर में 2022 में दिसंबर, और अब मैंने जो अपने लिए कोर्सेज एक दो देखे हैं, तो एक कोर्स का ये है कि मेरा थीसिस इस कोर्स से रिलेटेड है, लेकिन बैचलर्स के बाद जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो उससे रिलेटेड नहीं है. और दूसरा जो कोर्स है उससे रिलेटेड ना मेरा कोर्स मतलब एक्सपीरियंस है, ना ही मेरा थीसिस उससे रिलेट करता है. लाइक मैं अभी एक आर्किटेक्चरल फर्म में 1 साल तक मेरा एक्सपीरियंस है, और दूसरा अभी मैं एक कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर रही हूँ. तो एक जो कोर्स है वो मैं आर्ट एंड जी. और आपका बैचलर्स किस में है? बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया है मैंने. ओके. तो अब जो मेरे इस तरह से है मतलब कोर्सेज से, या तो मेरा एक से थीसिस मिल रहा है, तो मेरा अभी 1.5 साल तक का उसमें वर्क एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है. और जो दूसरा कोर्स है उससे रिलेटेड मेरा थीसिस तो नहीं है, जैसे आर्किटेक्चरल एंड कंटेम्पररी हेरिटेज का ओके. कोर्स है. अमना आपका क्वेश्चन हमें मिल गया, और मैं जवाद को कहूंगा कि जवाद आंसर कर दे. Jawad, would you like to answer? Can you repeat your question? Currently, I didn't listen. There was issue in the internet. Okay, Amna, can you please repeat a bit? जी. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने अभी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया है 2022 दिसंबर में ग्रेजुएट हुई हूँ मैं, और मेरे जो थीसिस है वो मैं एक कोर्स से रिलेट करती हूँ, तो मेरा थीसिस उससे रिलेट होता है, लेकिन मेरा अभी 1.5 साल तक का उसमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. और And how अभी much work जैसे experience do you have? अभी 1 साल मेरा एक प्राइवेट आर्किटेक्चर फर्म में था, और अभी तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए हैं वो मैं एक कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी कंपनी में कर रही हूँ. Okay, so if your thesis is relevant to that program, then you should apply for it, and you can increase your relevancy by doing some online courses. अगर आपका experience नहीं भी match कर रहा, आपका thesis और आपकी international जो courses होंगे वो match कर रहे होंगे, तो वो वर्किंग एक्सपीरियंस को भी अब फिर कुछ ना कुछ आपको मोल्ड करना पड़ेगा. इट इज़ बेसिकली मेन मोटिव ये होता है कि हमने अपने काम को रिप्रेजेंट कैसे करना है. वो रिप्रेजेंटेशन जो होती है वही सारी की होती है. समटाइम्स आप किसी और डोमेन में भी काम कर रहे हो, तो आप उस डोमेन को भी थोड़ा सा मोल्ड करके आप अपने प्रोग्राम के साथ लिंक कर सकते होते हो. तो उस लिंकेज पे आपने काम करना है. आपने चाहे किसी और फील्ड में भी काम क्यों ना किया हो, अगर कुछ ना कुछ लिंक बनता हो, कुछ ना कुछ हम कर सकते हो, तो वो आप कर सकती हैं. बाकी जिस फील्ड में आपने थीसिस किया हुआ है उसके रिलेटेड आपका प्रोग्राम है, तो आपके चांसेस उसमें ज़्यादा हैं. चले ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. Okay, this will be the last question, guys. And if you have any question, क्योंकि सेशन बहुत लॉन्ग हो गया है और हमारे स्पीकर्स के कुछ और कमिटमेंट्स भी हैं, तो this will be the last question, and you guys can ask any question on my Instagram, and any one of us will reply you there. तो क्योंकि हम शेयर कर देंगे स्पीकर्स के साथ, एंड दे विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस, एंड और आपको वहां से भी मिल जाएंगे स्कॉलर्स एवेन्यू के इंस्टाग्राम के ऊपर. तो आई हैव ओपनड क्वेश्चन आंसर सेशन, तो आप वहां पे भी कर सकते हो. नाउ अवैस, यू कैन आस्क. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा क्वेश्चन बिल्कुल है आइल्स के लिहाज से कि आइल्स सर मैंने पहले किया था, मतलब 2021 में किया था, 2023 में एक्सपायर्ड था वो, ठीक है. तो क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है? सेकेंडली मैंने इसके बाद ना पीटीई किया है, तो क्या आइल्स के बाद अगर पीटीई हम कर लेते हैं तो क्या वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है?
वैसे ये ना आपको प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को देखो। अगर तो उन्होंने लिखा होगा कि सिंस इतना लास्ट 2 इयर्स, देन आपका वैलिड नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन कोर्स। और अगर आपने पीटी दिया तो वो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स में ज़रूर लिखा होगा कि पीटी एलिजिबल है या सिर्फ आइल्स और टोफेल हैं या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी इवन एलिजिबल है या नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। तो आपको प्रोग्राम की वेबसाइट से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। I want to सर add मैंने one अब तक thing. जितने भी प्रोग्राम यस, जवाद जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो यस जी जवाद। sometimes PT उनकी वेबसाइट पे मेंशन नहीं होता, तो अगर आप श्योर हैं उस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए तो आप उनके कोऑर्डिनेटर को ईमेल करके भी पूछ सकते हैं कि मेरे पास PT ये है, क्या वैलिड होगा, तो वो आपको बेस्ट गाइड कर देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है सर, मैंने अब तक किसी भी मतलब वेबसाइट पर पीटी का वर्ड नहीं देखा है। ठीक है, मैंने सेम थिंग किया है कि मैंने कोऑर्डिनेटर को ईमेल किया, बट अब तक कोई रिस्पांस भी नहीं आया। 2-3 जगह मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में किए हैं अप्लाई, मतलब ईमेल किया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। तो एक ये भी इशू था जो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। ओके ऑलवेज ट्राई टू ईमेल लाइक कुछ होते हैं एक कोऑर्डिनेटर की यूजुअली ईमेल नहीं लिखी होती। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर माय कोर्स, वहाँ पे 3 कोऑर्डिनेटर्स की ईमेल लिखी होती है जो लोकल कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। तो ट्राई टू रीच आउट टू ऑल अदर कोऑर्डिनेटर्स एज वेल, बिकॉज समटाइम्स यहाँ पे रिसर्चर्स होते हैं, मोस्टली वो बहुत बिजी होते हैं। तो वो इस तरह की क्यूरीज को ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि वो यही समझते हैं कि हमने प्रोग्राम की वेबसाइट पे सब कुछ लिस्ट किया हुआ है। तो इसलिए तो ट्राई टू सेंड ईमेल्स टू एवरीवन हु इज लिस्टेड ऑन द वेबसाइट। तो फिर ओके आपको सर, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। मैं असल में 2018 का ग्रेजुएट हूँ, पॉलीमर का इंजीनियरिंग का, और मेरे पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और मेरी जीपीए थोड़ी सी कम है, लाइक मतलब एनईडी के, क्योंकि उस वक्त ना क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट था। तो मेरे पास परसेंटेज वाइज में कहूँ तो 65% है, लेकिन जीपीए वाइज कहूँ तो 2.14 है। तो क्या मैं मतलब किस तरह से मैं अपने आप को लाइक डिफाइन करूँ, क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, लाइक मेरी प्रोफाइल अच्छी है लेकिन जीपीए बहुत कम है। तो मैं किस तरह से अपना केस पुट फॉरवर्ड करूँ या एलओआर में किस तरह से बनाऊँ, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। ओके जवाब आंसर करना चाहो। Okay. Whereas to be honest, with such GPA, it is very difficult to get the Erasmus scholarships, to be honest, on the safe side. But you have a great experience. You can apply on the Erasmus scholarship, but I basically suggest you that apply for other scholarships too. सिर्फ Erasmus पे नहीं रहना, Erasmus पे भी apply करें, बाकी scholarship पे भी apply करें, क्योंकि for Erasmus 2.14 CGPA is really less. Okay, thank you. Okay guys, thanks everyone, and Usman, that's if you all. don't mind, can I ask one question? This is the last, and this is a very important question for me. Okay Raj, you can ask. थैंक यू सो मच। सो उस्मान, मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने तकरीबन 7 से 8 रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं आरशिप्स। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उसके सर्टिफिकेट्स की नीड मुझे होगी कि नहीं होगी। और दूसरी चीज़ मुझे आपसे ये भी पूछनी थी कि जो इरास्मस कैटलॉग होता है, जब उसमें हम अपने प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आती हैं। कुछ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की होती है, कोई किसी और चीज़ की होती है। तो किसके थ्रू हमें अप्लाई करना होता है। आखिरी सवाल ये है कि जो हमारी प्रोग्राम की डेडलाइन होती है, हर प्रोग्राम की डिफरेंट होती है या एरास्मस की एक ही डेडलाइन होती है? ओके मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर वन बाय वन करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट्स होना जरूरी नहीं है। यू कैन जस्ट लिस्ट इफ लाइक अगर आपको होगा तो दे विल वेरीफाई फ्रॉम द रिसर्चर्स विद व्हॉम यू वर्कड। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेट्स होना जरूरी नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग कि अप्लाई कैसे करना है। अच्छा ओके, आप कैटलॉग पे जाएंगे, एरास्मस की कैटलॉग पे ऑलमोस्ट टिल नाउ 192 कोर्सेज आर लिस्टेड, और वहां पे जाके एक होता है प्रोग्राम का नेम एज अ हाइपरलिंक लिस्ट होता है, और एक होता है नीचे वेबसाइट का लिंक होता है। तो आपने नीचे वाली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और वो आपको प्रोग्राम की मेन वेबसाइट पे ले जाएगी, और वहां पे आपने एप्लीकेशन में जाना है, लाइक यू नो हाउ टू नेविगेट। तो आपने वहां पे जाके समहाउ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, तो वहां पे आपने अकाउंट क्रिएट करना होगा, और दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई। बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई आपने किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना। जो आपको कैटलॉग पे वेबसाइट मिलेगी वहीं पे यूजुअली अप्लाई करना होता है, बल्कि वहीं पे ही अप्लाई होता है मोस्टली। और अगर कहीं अप्लाई करना हो तो यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे भी, जैसे जो प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी ऑफ घैंट से रिलेटेड है, तो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ घैंट की वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। बट वो होता सारा कुछ प्रोग्राम की थ्रू ही है, प्रोग्राम के ऊपर आप अप्लाई नाउ में क्लिक करते हैं और आप इस तरह से। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज, राज कैन यू प्लीज रिपीट? So last question was कि डेडलाइन सब प्रोग्राम की डिफरेंट डिफरेंट होती है, एक ही डेडलाइन होती है एरास्मस प्रोग्राम? डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं, डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं। Okay, perfect. Thank you so much.
Okay, Raj. Okay, guys, that's all for this session, and I'm very thankful to all the speakers who like give us some time. और ये बहुत मुश्किल होता है इनके लिए भी टाइम निकालना, क्योंकि बहुत मसरूफियत होती है. When you are studying, you have to travel around different countries or things like this. So I'm very thankful to all the speakers who invested their time in you guys, and we wish you good luck. और जवाद, आप और इकरा कुछ ऐड करना चाहोगे at the end? At the end, I just want to say that do not get discouraged by the failures. Failures are nothing, they are just like to change their path. ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी के path को change कर रहे होते हैं. Actual में आपको fail नहीं कर रहे होते. Failure सिर्फ आपकी एक opportunity बंद होगी तो दूसरी open होगी. तो ये सिर्फ आपकी path of life को mold कर रहे होते हैं. So do not get discouraged from this. Okay. And I think if Erasmus go end of the world now someday, there are many other scholarships. Keep your options open, keep an open mind. हर जगह apply करें and अपना हद तक you can do the best. उसके बाद a lot of this depends on luck as well. So application submit करके maybe forget about it. उसके बाद and then move on to the next deadline जो भी आपकी है. So don't lose hope. Yes. Focus on your goals and stay relevant. Last once again to sum everything up, stay relevant. And yes, Erasmus is not still the end of the world. बहुत और अच्छे college programs हैं. So open mind रख के इस application process में जाएं. Yes. Okay, guys, that's all. And once again, thanks everyone for joining. And if you guys have any question, you guys can ask on the Scholars Avenue Instagram, and I will try to share the questions with scholars, and they will try to answer. Okay, guys, that's all, and see you someday. So everyone, Allah Hafiz.